है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। दैट इज गालिब। Good evening and welcome to Sheetal of Conversation, 128th show. You're witnessing the summer show. We are almost in the mid of the summer, in June ending, and we have been doing this show since last 5 years, and I am already grateful and indebted to all of you, the followers, the admirers of the show. So today, once again, this rendezvous, Sunday rendezvous is there, and uh, we have been talking about art, culture, literature, musicology, civilizational shades in this part of the country, and also the treatises, travelogues, old wisdoms, geography, color, folk memory, landscape, flora and fauna. We'll be soon doing, a chapter on this bird watching, birds who migrated to Kashmir and now stopped coming to Kashmir. So that will just give us an ecosphere, because bird is a kind of a, it's a kind of a, you can observe a bird and you can observe the climate around. So bird tells you all about your vegetation, your forestation, and your wetlands and the water bodies. So I'm going to once again take with Professor B.L. Jutsi. So he's working on that, and I had done one chapter on Mr. Master Samsar Kaur. He was a great bird watcher on his times, but yet we'll be going into a next level now. So I'm really once again indebted. I'm very joyous to see all of you today. Uh, Today we are going to talk about the author. We are going to talk about a book. It's a, rather I would love to call it a book travel. So this is a book travel with the author. Our author is quite young. He's a Gen Z, and I would like to begin with this Albert Camus's the statement, rather his saying, or an adage, or a statement, or a literature, what you can call. The purpose of a writer is to keep civilization from destroying itself. It carries a lot of weight and lot of depth to understand it. So to begin with, I'll say that today's book is all about. Its title is very fascinating: Grammar of the Void. Grammar and void, as we all know, grammar and void. Grammar, we all know the syntax, and we all know the void. Void has different connotations in Oriental and Occidental, vision. But then again, void is a great term. Everything comes from the void, everything goes into the void. That's what we have been taught right from the beginning. So this is a very fascinating subject, and Grammar of the Void is a Gen Z literary expression that oozes from the dormant subconscious and conscious layers of mind in its challenging, unarrested, grotesque waves as a consequence of shocking civilizational disruptions, exiled consciousness, existential threats, moral denigration, and psychological trauma. Receiving wide, grave, brilliant reviews of the and the accolades, collection of 10 mind-probing short stories reflect and examine the gruesome emptiness, lifelessness caused by the several triggers, emphatically dreamlessness, annihilation of memory, and even debacles of its presence. It envisages the unspoken self-evolved defense pattern which Satyarth Panditaf, the author, coins as a grammar, and that equips to endure trauma when the established socio-psychic defense antidote become non-existent. Crisscrossing across the territories of realism, surreal, and the logical imagination, I may call it, it's my own terminology, as a common denominator, his story narratives rather, they climb the scaffoldings of life, its imagery of objects, characters across the towns, cities, villages, and in places like hospitals and restaurants and other places.
So describing theme of displacement, the main theme of this, book seems to be. I mean, all the stories in the book, commonly, if they thread it, it seems to be, as I have been given to understand, displacement, guilt, inhibition, insanity, ethical collapse, and creative burnouts. Satyarth Pandita, I must tell you, he's a Gen Z, as a brilliant man, and probably we must learn something from the Gen Z, because there's a perception in our minds right from the beginning of our childhood. We observe that we don't observe a child. We always, it's a one-sided traffic. We always tell him about the things. But child is the greatest observer. And our Gen Z, he's in mid 20s or late 20s. This book probably will communicate about the observations of Gen Z, their aspirations, their brain structures, their explorations, and their deep psyches to understand the world, and the impressions and the changes and the transitions, debacles, happinesses, joys, which affect their impressionate mind. So, Sadat Pinta is a PhD scholar from the National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore. He has been actively writing since a young age of 16, probably, I don't know, 16 or 17. It is 10 years since his writing. His work has been published in reputed dailies and periodicals, including Outlook, The Wire, Madras Courier, The Quint, Borderless, and Kitab. So let's explore this book, Grammar of the Void, with our young Gen Z author. Satyarth, you are welcome into the Sheetalnath Conversations studio. I am really delighted and joyous to have a very creative and an forward-moving conversation. We have been doing history, we have been doing to the scientists, we have been doing to the people, talking to the people who are already much matured in the grade. They're the professors, they are the teachers, they are the ecologists. But today, it's an opportunity to talk to a Gen Z personality, and who is into neurosciences, and now he has written this, the Grammar of the Void. Before we begin with the book, first of all, I welcome you into the studio. Thank you, sir, for inviting me to Sheetalnath Conversations. And namaskar to you, and namaskar to all the viewers watching this conversation. I hope whatever the time we spend here, it is worthwhile the time of the viewers as well. Yes, thank you very much. Thanks a lot once again. So to begin with, as per our ceremonious, opening is, we'll definitely, because you were born after the migration happened, after that horrendous thing happened, but you might have born afterwards. And tell us something about your childhood and your memories. Connect to your ancestral land, your family, and then your schooling and colleging and development. As a kind of a admirer of as a literati, and how did it all happen? Tell us something about you first, then we'll talk about your book. So, I was born in 1998 in Jammu. Right. So at that time, for like prior to my birth, my family had been living like other Kashmir, exiled and displaced Kashmiri Pandit families in tents in Jammu. So after that, my grandfather, he he used to run a shop, general store in Kashmir. So when he came to Jammu, he saw a small piece of land. I'll tell you one anecdote. So at that time, they did not have any money with them. So like all the other Pandit families, they sold their land or whatever the house they had. So my parents, they belong from Atsan, Pulwama, Kashmir. So Askal. there was a distress sale, and they whatever the little amount of money they got. So my grandfather saw a small shop. It was a small shop that was built in a barren plot. So he wanted to do this thing because he had been doing
the shop things, like he had been running the shop in his village. So he purchased that land, but he did not have money to buy the entire land. Oh. So he only got the half portion of it. Like it was 10 acres, he got only the 5 acres. So that is it. I was born there, and my schooling, it happened in Jammu in Coventry Scholars School till 10th. So in 11th and 12th, I went to Government Mixed Higher Secondary School. After that, I applied for these NEET exams, and after that, in my college, I went for graduation. So I did my dual degree, a bachelor and a master's in biological sciences. Oh. So talking about writing, so I used to write from a very young age, even before I started to read actively. Actually, my father used to receive some diaries, normal stuff from his friends. So the cover page bore his name, Deepak Raj. So whenever the postman used to come, I used to run and get the parcel from him, so that my father doesn't know that I have already received the diary before him. And I used to collect all those with me. And then I used to jot down things. I just wanted to fill the pages. It didn't mean what I was writing. Because at that time, like, I even copied. There used to come those encyclopedias, children magazines. I used to copy word for word. My only aim was, Balwan Gargi, a writer who wrote the Neck Triangle, not a very great writer, but he was very famous in our college times. He always used to say that empty, you know, the plain sheet of paper gives me idea to fill it. Whenever there is a plain sheet of paper. So it was a diary in your exactly. case. Right. So I used to feel that, like, it gave me you can say it, a pseudo sense of false satisfaction that I am writing something of my own. Like when I used to reach the end of the diary, it was filled with something that I had written, something of my own, something copied from other things. Sometimes I used to write amateur poems at that time, Hmm. and I used to show it to my father, and he used to encourage me. He used to actually pinpoint the mistake, grammatical mistakes, these things. I was in 7th or 6th standard at that time, so you can imagine the level of, the poems I was writing at that time. But he took it seriously, and he saw that something in those scribblings of a child, and he encouraged me to send my poems and short stories to Springer. It was a monthly children's magazine. It was published by Kashmir Times. Oh. So he subscribed to that magazine, children's magazine, and I emailed them. I did not think at that time that they would publish. But to my surprise, when one day I was in school, so it was about noontime. So a peon came into the classroom and he told me that one of the sir has called you to his office. So I went there. So a parcel had come from Kashmir Times office. So my teacher, he was also surprised that what work or what business would Kashmir Times, the newspaper agency, would have to do with a 7th or 8th standard child student. So I got that parcel. I opened it in my class, like the teacher was teaching. I used just tore open the envelope, and there was a check inside. It was a 500 rupee check, Oh. which my story had won first prize in the competition or in that thing. So Oh, ideally, great. that was the first amount or first money that I got Encouragement. for my writings at that time, and a certificate. They had given a certificate, and it was very enthralling at that time when I received that Springer newspaper, to see your byprint, your byline in print for the first time as a child. It felt exhilarating at that time, and since then I have continued to write. Now, if you ask me, like, where did this come from? My father is also a writer. My grandfather is also a writer. So I'll tell you one thing, that my grandfather, he used to he like he currently also he writes poems, Kashmiri devotional poems Oh, essentially. great. So at that time, he when he used to run the shops, whenever I came from my school at 4 o'clock, 4 o'clock, we used it was a day boarding school.
So after school hours, I used to go and sit in my grandfather's shop. At that time, he and his friends are also poets and writers. They used to come. Some of them used to sit inside the shop, some outside the shop. They would smoke cigarettes or bds at there, and I used to stand outside listening to them. So my grandfather would take out a piece of paper from his pocket, or he would recite a new verse that he had written, and everybody would listen, and they would erupt in applause occasionally. And then one by one, they all would take out their latest writings and they would recite. So at that time, the shop, it would transform into something magical for a young boy like me. I just used to Impressionable age. I used to stand there. I used to listen to those verses. These all were Kashmiri verses. I did not understand the complete meaning of those poems or whatever was being said, but something, it excited me, like what they were saying. And one day I remember my grandfather was going to buy some groceries, so he kept me in charge of the shop. Okay. So at that time, I was going through all the registers that were kept beneath the table, the counter, shop counter. There were tombs of registers, and I took them for account registers. But when I opened them, to my surprise, they all were filled with beautiful handwritings in longhand. All of them Oh, were filled with poems in Nastaliq language, script nostalgic. actually. Nostalgic, yeah. So at that time, I realized how relentlessly my grandfather wrote. Even in shop, whenever he got time, he used to write, and he had us separate those fountain pens, special fountain pens, with which he is also he does That is an old calligraphy. fountain pen. Yeah. Yeah. Because at that time, Antique. I remember when the printers were not there, so the books, they had to be written in longhand. So my grandfather, he used to write like a book. He has written like a book for somebody else, in longhand, from first to the last page in beautiful Oh, calligraphy. So yeah, though my father, after that, my father has been a great inspiration. He also came up with his book in Wonderland in 2013. So books were never actually, a distant object, or they were it wasn't. they were books in our home were at a hand's distance everywhere. So in my room, I used to go through my father's book. I used to read 2 or 3 pages and then leave the book. But I used to love reading and going through all those books. There were Bhagavad Gita, commentaries, newspaper Your articles. father is a novelist also. He's an editor. He's a very brilliant writer and editor. Yeah. I remember So he's a good friend of mine, and I know him. But he's a brilliant man. Brilliant man. I mean, he's master of his field. Yeah. so this writing influence, yeah, my father and grandfather, they have this influence has come from them, the writing. It was all in the family, in the You can say bloodline. that. So, some impressions while you grew up in place Jammu, your school times and college times, and tell us some unravel some of your impressions which are there and still in our heart bay, which has affected or molded or given some kind of a insight into your psyche or your mind, young that. So, right from the childhood, like I grew up listening to stories. Like Okay. my grandmother, my mother, and my father, they used to tell stories about their home in Kashmir, about the cows that they had, about all those things that they used to do, in paddy fields, how after school hours they used to go, and how they used to travel to their school, and how many rooms the house had at that time. So I could only imagine from their wordings, whatever they were saying, I was constructing my ancestral home, how it would have looked like, whatever they are saying. They are all in all praise about all those things, the stream gurgling behind their house, Stream. which is totally different from the place where I was born. There was only concrete and nothing else.
and just a shop. Where do you And live in so, Jammu? Jammu, which part of Jammu you lived? Durganagar. Oh, Kashmiri. There are not many Kashmiri families. Yeah, yeah, Almost yeah, yeah, there Kashmiri are Mahalla. many. Yes, yes, yes. So after that also, like, I did not get the opportunity. Like, I went to Kashmir a few times as a child, but I do not remember much at that time because I was not aware like what all those things are. And our ancestral home is in Pulwama, so due to security reasons also, like, the parents feared going into the deep recesses of those villages. So I have yet not seen my ancestral home Oh, in Kashmir, despite going there several times. So we just go over there like tourists, as we say. We have not even seen the house actually, that was there. the whole because I have we all have the similar stories. The landscape of the villages have changed now. The torrents there are already reduced or they are vanished. The torrents, because I used to go to my Masi's place. They had the orchids in a place like Shupayam, Haram. So we used to go in summer vacations. I lived in many places in Jammu, here, Madhapur, and Srinagar. So, but our Masi was in the village, and they had a huge, beautiful house, and that was a torrent going on in front, and their orchid was say about half a kilometer from there. We had to walk down and cross a river, gushing river that was known as Tongar. It was like a chinab, small chinab. So I have those experiences. But now of late, when I came to know, the entire scenery has changed. There are no more torrents there. There are no more brooks there. The, there are buildings and buildings and buildings, and I mean, it's a concrete jungle, and it's something very hallucinating for those who belong to those places and who had seen it as young. So I think whenever you'll go there, certainly you will love to be there. It's a native place. There is a genetic inflow as well. But on the ground, Kashmir has changed a lot because of population and deforestation, and water bodies are gone. Yeah, Recently, I please. had just on 30 and 31st May. So I was Mm. invited to the Kashmir Literature Festival that was held at SKICC. So there was a 2-day program. So I went there, but unfortunately, I couldn't go to many places due to Okay. my other, plans. Like this thing. But yeah, Anyway, I hope to visit soon you my must always. homeland. You must go once, twice. Kabhi to fir, because these are the places, ancestral places we must always visit. They give us a lot of energy, kind of a thing. Uh, I would like to start with this grammar and the void. First of all, I think you have been writing since long, much before you wrote these 10 popular stories, or rather 10 very, very well acclaimed stories, which were published for the first time. But before that, you had also attempted to write something, as you told me other day. So tell us about the story of writing, writing, seriously into the business of writing. Uh, so, like, if I talk about this, see, so writing for me is a it's kind of a compulsion. I need to write, like how I need to eat food, how I breathe. It is like that. It is a force. I cannot live without it. Like, I hear some people, some writers, famous as well. They say for them, writing is catharsis. It is cathartic to them. Catharsis. Yeah, but for me it is not. For me it is a torture. इसमें वो हाँ exactly, Could like you I explain can it? Could you explain it? हाँ, yeah, yeah, exactly. I can only speak for myself. Of course, different No, people no, have but I different. would like to. This is something a different view. Yeah. See, writing, when you write, it drives you mad. There are so many ideas, so many characters to follow. You have to sit there. You have to get it on the paper. For me it is not thing that I desperately want to do, like, in which gives me pleasure. Rather, it is only when the I put the final full stop to any story. It is only at that moment I feel the release, but the whole process, it is torturous for me, how to get all these things, the plot, the characters.
takes a toll on your mind to do all these things. तो किसी ने तो कहा था, no sane person would try to write a book like that. तो वो एक उर्दू की भी फेमस, शायद पाकिस्तानी है, कहाँ के मेरे को नाम याद नहीं है, ये नाम Okay. याद है, लाइक बानो कुदसिया। तो उन्होंने भी बोला था कि आपको कोई भी आर्टिस्ट आपको उस जिन की कहानी नहीं बता पाएगा जो उसके पीछे पड़ा है। So it is like that, कि something or some force is there that drives you to do this thing. So Hmm. और मैंने मतलब अभी आपसे पहले लाइक मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी किए हैं, लाइक Okay. बहुत सारे के साथ, बट सम ऑफ द थिंग्स आर जो मैं यहाँ आई एम रिवीलिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो राइटिंग के केस में मेरे लिए कैसा है कि इफ देयर इज एनी आइडिया, कोई भी, इट कैन बी बेनल, इट कैन बी प्रोफाउंड, it sits in my head, in my mind. जैसे pirouette, there is a story pirouette in my Yeah. book. It, Curate, yes, I read that. yeah, ये मेरे Circles and को circles. 2013 में मेरे माइंड में आई when I was doing my masters in neurogenetics. So I worked on Drosophila You fruit did it flies. from where? Where were you doing master? ISER Bhopal, Indian Institute It's a of Science Bhopal. Education and It's a Research. great Yeah, city. My Masi lived yeah. there. One Masi. I have childhood memories of Bhopal as well. Yeah. So that idea sat in my mind at that time, that there is one mutation in flies, Hmm. those fruit flies, banana flies. With that mutation, those flies go rogue. Rogue in the sense, when they are young, they move in bigger circles, bigger In circles. arcs. Yeah, in circles. It is a clockwise thing. They are not in a straight line. And as they grow, as they advance, the circles become smaller and smaller until finally it becomes at a point and they die due to starvation. They forget about eating at all or anything. They just move, and at the final time, the arc becomes a point, this deathbed, exactly. So I do not know why this mutation or what this thing fascinated me, and I this idea was in my mind for until recently, like in 2025, and I did not know how to get this thing out. So for me, any idea, it can be banal or profound, I just need to get it on the paper. Unless and until it is on the paper, it will drive me mad, it will drive me insane. So that's the only thing I keep writing. You have your own methodology and structuring your, the story and then developing it. I would like to ask, Sad, I would like to ask one question. Apart from your grandfather and your father, who are the writers, and apart from that, because you are writing in English, uh, certainly you were born after 1990, so English must be very familiar subject with you. In our times, हमारे time में, we used to, I mean, like I used to write columns much earlier at the age of 20, 25, but my English was all because of I used to read novels, lot of novels, stealing it from the shelf of my father and stealing Hindi novels from my mother. Or I used to get a thrashing as well. In those times, they used to thrash you if you read something of their books. What what was your bearing apart from the classroom English books about writing the authors, especially English authors, because you are writing in English. So initially, like I told you, I wrote before I started to read actively. So it is only after a later point when I realized that to write, you need to read. Oh You yes, need to see for how anything people you are do. writing. Of course, of course. So I started to read actively from 8th or 9th standard. And मैं आपको ऐसे बताऊं, मैं स्टेट बोर्ड में था। Okay. मैं स्टेट बोर्ड था मेरा, एंड व्हेन वी यूज्ड टू गो टू ट्यूशन क्लासेस, वहाँ सीबीएसई के भी स्टूडेंट्स आते थे। तो वहाँ Hmm. शायद 9th क्लास में सीबीएसई को दे हैड प्रिस्क्राइब टू नॉवेल्स, थ्री मैन इन अ बोट एंड गलीवर्स ट्रेवल। Hmm. तो वो लोग वहाँ आते थे, एंड आई यूज टू बिकम वेरी फ्यूरियस कि वाई डोंट वी हैव दिस इन आवर स्कूल, दीज पीपल आर गेटिंग टू रीड नॉवेल्स एंड वी डू नॉट हैव। एंड आई यूज टू, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि आई वॉन्ट टू बोरो दिस बुक, आई वॉन्ट टू रीड दिस थिंग। एंड मैं घर ला के पापा को बोलता था जबरदस्ती शाम Hmm. को, पीपल आर रीडिंग दिस थिंग, आई वॉन्ट टू रीड दिस थिंग, मेरे को 3 पेज पढ़ाइए, 2 पेज समझाइए इसमें क्या लिखा है।
तो पढ़ने के लिए वहाँ से फिर मेरा 8th 9th से एक्टिवली स्टार्ट किया मैंने पढ़ना। देवर बुक्स, तो फर्स्ट वट एवर केम इनटू माय हैंड जो मेरे फादर की लाइब्रेरी से था, बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि क्या है क्या नहीं है। बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई यूज टू बाई बुक्स। मेरे को एक चीज ठीक था कि जो भी ब्लर्स पढ़ते हैं या कुछ, आई यूज टू गेट एन आइडिया वेदर आई विल रीड दिस और नॉट। एंड देयर इज अ सेइंग दैट पीपल से दैट अगर आपको व्हेन यू आर रीडिंग 5 or 6 बुक्स यू विल नो वेदर यू आर गोइंग टू लाइक द बुक और नॉट। बट फॉर मी, मेरा एक ऐसा प्रॉब्लम भी है, यू कैन से इट इज अ प्रॉब्लम, कि मैं जो बुक स्टार्ट करता हूँ आई हैव टू फिनिश इट नो मैटर हाउ बैड इट, मेरा टाइम वेस्ट जाए बट That is आई something विल। very good. That's very good. बिकॉज मैं जो भी लेता हूँ कि अगर मैंने 20-30 पेजेस भी पढ़े, जो अगर इवन इफ दो द बुक इज नॉट गुड, इट इज इरिटेटिंग, इट इज टॉर्चरस, आई विल सिट एंड रीड इट टिल द एंड। ये एक Khushwant Singh used to say that you know Khushwant Singh. हाँ, आई हैव He रेड was a हिज। great writer, and he died at the age of 100. And राइट। he wrote controversial things. He also copied many authors' pieces. He was a very notorious as well. But he used to say that once you read 3 or 5 pages of a book, you decide that this book is worth reading or not. There are certain books you have to plow through. Oh, it's very hard hitting. I remember uh, Hemingway's that Old Man at the Sea, that राइट। was prescribed to us. My goodness, now I read it, it was very easy. I read with some literary friends of mine because I wanted to revisit what I have read. I have read a lot of literature, but it is much, much before when I was in school, college, and later days. After 40s, I had 45, I had stopped reading all these things. I used to read something else. But I found it was very difficult for me then to read. Even later on, when I was in college, there was a fashion in our times to read Ayn Rand's novels. Ayn Rand's famous novels, the द Fountainhead was a फाउंटेन हेड। very romantic one. Atlas Shrugged, and her play also, we did one of a play also, that Night of January 26th. And she was a kind of a fascination in those days. We never understood what she says, but we were madly in love with her. Much later, I realized that her whole theory was full of faults, but yet you know. So, but still, I could manage when I was in college. But reading a book like Hemingway's book in the early, it was like blowing around. So, when you write a story, do you think this thing in your mind that the flow of the sentences, the flow of the paragraphs, the flow of the story, the motion of the story, it needs to be smooth? Do you consider these things? See, the way Hemingway writes, he has a method. He developed a method actually. Like people Hmm. followed his crisp and short sentences, which at the time his contemporary, the Faulkner, William Faulkner, he was doing the completely William the Faulkner opposite was. thing. He was a contemporary. So while writing, see, I only try to write in a simple way. People understand. That is the But best. I have been told by people that your way, so in some stories, it is not simple and it is very difficult for them to understand. So the Oh, story, yeah. So the story, it is how people are perceiving. It is a subjective matter. Hemingway is writing for one person, it will be simple, for other it will be difficult. It doesn't matter. But you have to keep in mind that the thing that you are saying, it needs to get across. Ultimately, it is a mode of conversation. You are saying something. You want people to hear. It is not unlike poems where you are doing the allegories and metaphors. the You are poems are not relating. something. There you have a liberty. You have liberty of uh, imagination. You have liberty of many things. yeah. But So one in thing is, short stories, I Tolstoy has also said it that it is most difficult is to write simple, yes, exactly. communicate. And That is that the is most what difficult. I am aspiring to write simple. And I've just started. There is a lot of, No, but learnings along the way. your book, I saw the reviews; they were very wonderful. The people are appreciating your stories, and it's a fresh idea. Some of your stories, because I saw the gist, I didn't have the book, so I found them very amazing, very fascinating. Something fresh, something new. Although people compare it with Kafka, and they
compared it with Camus, and they compared it with that film. But then again, comparison will always remain in literature. It is okay. Uh, who are the authors? Who are the authors of English literature who had an impact uh, on you as a student, as a reader, and also as a writer? There are actually many countless authors that I have read. I'm not just like, it's not like a boasting, but yeah, there are many authors like in Indian authors also who write in English language. I'll start from them only. So I have read Tagore, like there हाँ, was Khushwant Singh also I have read. टैगोर का क्या Bengali पसंद आया आपको? Bengali टैगोर, में I've read his short stories and अय, रासमणी उनका का एक बेटा, दो novel. रासमणी सा, या, एंड देन डाकघर, बंगाल में हाँ उनके वो घरे बहरे वो बुक्स वगैरह उन्होंने भी लिखे अरे हैं जो बरे इज द द मूवीज या होम एंड द poems, वर्ल्ड his poems होम are एंड द वर्ल्ड आई एम masterpiece. नॉट इनटू पोएट्री मच आई एम इनटू fiction Prose so fiction. yeah prose and fiction so you Who must have else heard about other than Tagore? Nirad C Chaudhary, अच्छा, नीरज चौधरी, yes, yes. the I autobiography of an unknown Indian. autography of him. That was a much earlier time when he was from England, probably he lived in England, huh? Neeraj He Chopra. went to England at the And later he stage and he probably died he there. never came back, and he loved his to staying in England. And on a similar line, his predecessor, Michael Madhusudan Dutt, I have read his books Michael also. Maksudan Dutt, my goodness, great Yeah, personality. The Killing of Meghnad, I love that book and the idea behind that book and how Michael he Maksudan increased was an the. actor also. Do you know? He was also an Yeah, actor. yeah, I know. Yeah. And like both It of was them the were like time of those polymath. time, because I'm a theater critic, so I have been writing lot much on theater stuff. I have all the time writing stuff. So Michael, it was time of the Parsi theater in India. The theaters where the plays used to, movies were yet to arrive. There was a motion film later on. So they used to Okay. be in Bombay and Calcutta. They were the main cities, and they used to run for around 6 hours, 7 hours, 9 hour shows with musical ballets and every apparatus and all. Michael Maksudan was a Dilip Kumar. He Okay. was a people like him were the Dilip Kumar of his own times. Anyway, please, आपने याद दिला And दिया, then बहुत प्यारा इंसान. Yeah. हाँ उनकी वो किताब अच्छी थी. फिर सलमान रश्दी, उनका मैंने काफी पढ़ा हुआ है. Midnight Children. Midnight Children, East West उनकी short story collection है. I like that. Which one? Which And one? East and East. West, East West. It is a short story collection. Then Salman and Haroon and the Sea of Stories. ये भी एक उनकी एक book है जो Ah, मुझे oh, अच्छी लगती he has that. है. It is like a But I'm not very much in tune with his writing style. I don't know. नहीं that is okay. वो उनका लिखने का स्टाइल अलग है like. वो मुझे कभी प्रभावित नहीं किया. मैंने पढ़ी है, मिडनाइट चिल्ड्रन पढ़ा है उसका, बट मुझे कभी उसने इट हैज नॉट टच्ड माय हार्ट. ओके, एनीवे. Then going to the Russian literature, Dostoevsky is there. उनका मैं आपको एक दोस्तोयेव्स्की. उसमें मैंने पढ़ा था कोविड में, कोरोना लॉकडाउन में. उसके पीछे भी एक रीजन है लाइक वी हैव अ स्मॉल, जो भी मेरे दोस्त हैं आसपास जो लिटरेरी बैकग्राउंड से हैं या हु टॉक अबाउट लिटरेचर, तो मैं जब भी उनसे बात करता हूँ या कुछ है लाइक दे ऑलवेज यूज्ड टू ब्रिंग दोस्तोयेव्स्की इन कन्वर्सेशंस. दे यूज्ड टू ब्रिंग दोस्तोयेव्स्की जो भी जिनके साथ कॉलेज में या अंगर साइड से. So I had not read anything of him, and वो बोलते थे यार ये जिसने ये नहीं पढ़ा कुछ नहीं किया यार. And they used to discuss his books, his ideas among themselves. And मेरे पास कुछ था नहीं बात करने के लिए. फिर मैंने बोला यार कि the books that I am reading, they are not reading. Let me read this also so that I can at least engage in the conversation. मेरे को करना है इसमें. So वो एक तरीके से you can say ईगो में ले लिया या कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है ये, कि so मैंने कमिटमेंट टू योरसेल्फ. कमिटमेंट था हाँ कि let me see कितना क्या है इसमें, कि ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने पढ़ रखा है, like they are taking it as an achievement, जो कि अपने आप में है. आफ्टर रीडिंग दोस्तोयेव्स्की का कौन सा पढ़ा आपने? Crime and Punishment and this Brothers क्राइम एंड Karamazov पनिशमेंट. and Brothers Karamazov ब्रदर्स को. and the And Tolstoy? notes Tolstoy? from the underground. That I have not read. Tolstoy? Tolstoy's की short stories हैं. I was trying to read Anna Karenina but वो अभी हुआ नहीं. Anna Karenina was masterpiece. वो Anna है. Karenina. Then there is
फ्रेंच एंड इटालियन लिटरेचर में है, इटालो कैल्विनो मेरे को पसंद है, इटालो स्वीवो मेरे को पसंद है, उनकी अ लाइफ, उसका How फ्रेंच much land? टाइटल है सोना मित्र। Tolstoy's famous story is how much land does a man require? That's a राइट beautiful राइट story, राइट राइट। wonderful story. तो उसमें Yes, yes. एक, Please go on. Yeah, देन Russian and इटालो स्वीवो, उसकी एक जीनोस कॉन्शियंस करके एक बुक है, दैट इज आल्सो गुड। फिर जर्मन में आप जाएंगे, यूरोपियन में फ्रॉइड आई हैव रेड कार्ल यंग, ऑल्दो ही इज नॉट अ नॉवलिस्ट साइकोलॉजिस्ट था, बट जो उनकी Freud बुक्स को है, पढ़ा है. मैन एंड हिज सिंबल्स, एंड देन देयर इज दिस ड्रीम्स, reflections and memories by Carl Jung, that Carl changed Jung. my life actually. Yeah, Carl Jung. Carl Jung is basically the original psychiatrist. He was the first. He was among the earliest ones who created this science of your science. This what do you call it? Science of evolution. You can say when evolution or science of mind, evolution Like of mind. Freud, like he was Freud's student. Because Carl Jung, yeah, please, please. It's तो I उसमें really want to discuss all of them, but yeah, please. नहीं नहीं, मैंने उसमें वो एनेक्डोट था उसमें जो मैंने एक बार सुना था कि जब when they first met young Carl Jung and Sigmund Freud, and they started to talk, they started at a stretch for 12 to 13 hours, ऐसा कुछ था, like without eating or anything. But apart from that, फिर यूरोपियन में आर्थर शिंसलर करके एक author Schindler. है, Schindler, yes, he was an author. So why is famous? Because he introduced the idea of interior monologue in Europe. कि how to proceed a story via interior Soliloquy, monologue. Yeah, like internal. that. तो वो मैंने एक पैटर्न पे अपनी एक स्टोरी बनाई है इसमें, स्पीशीज ऑफ Oh, सफरिंग, that is completely based on interior monologue. So I was trying whether I can recreate something like that. तो that हाँ, is तो surreal. बहुत सारे हैं। Which story here? Actually, that was उसमें much. उनकी उनकी बुक का नाम है फ्राउलिन एलसी। इट इज टाइटल FRAULEINELSC। इट इज इन इंग्लिश, ट्रांसलेटेड Oh, इन इंग्लिश। एंड देन अभी रिसेंटली आई एम रीडिंग निकोस कजानजाकिस। ही इज अ oh, ग्रीक ऑथर, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, लाइक स्पिरिचुअल ऑथर भी बोल सकते हैं उसको, बट द वे ही हैज नरेटेड थिंग्स, आई टोल्ड यू द अदर डे ना when we were talking, like उसके yeah. अंदर इतना लिटरेचर के लिए था, like when he was on his deathbed and he Hmm. was talking to his wife, he was saying that I am willing to go out on streets, like extend my hands in front of people and beg one hour Right. of their life, I write so free. that he can write the 3 novels that he has in his mind. And that just Wonderful. blew me apart, like the love for writing, that should be there in a writer. Wonderful. So wonderful. And you have you apart from Tagore, Tagore is something I think is the greatest in the continent, contemporary. But apart from because you must have been introduced to the existentialism and the absurdity, and Kafka's Yeah, and yeah. Camus and all that. But uh, on the parallel level, because you belong to a good literary family and a great Kashmiri Pandit family, and you have a great background. So, did you ever have sought the parallels of this absurdity, existentialism, expressionism in Indian continent? Did anybody appeal you, or did you go through any prose or the literature See, about? they're those people, the ones that they are talking, their ideas, they are indeed taken from the Indian literature. When I talk about literature, it goes way back to Rig Veda, Bhagavad Gita, like the religious texts that we have. Because I can point out things. I have, like the Greek literature, I've read Greek philosophy. I had the course in my college time, like out of interest I had taken. Even the Greek philosophers, the philosophy that they have, I have drawn parallels with the Indian philosophical system, be it Vedanta or Kashmir Shaivism, even. So yeah, there are many parallels, and the all of them, the ideas that they have, expanded or reconstructed in their own way, they are developed from There what are the local effects, local syntax, local all the effects, geographical, physical, genetic, uh, you know, uh, what do you call it, latitudinal, longitudinal, you know, all kinds of effects are there.
But yes, that's you wonderful. You at least you know it. Gen Z knows about it. That these ideas have traveled much earlier from here, and then it developed in their own ways. Like there's one system I remind you, that is the transmission. Transmission is a theosophic. It's an energy, the higher energy, pure energy. It's a top-down model. It was here till the 72 generations before Raja Dashrath. It was here with the great people, but it went away, it eloped and it went away to Iran. So many things, many Iranian masters, not the ordinary people now, religious people, the masters, that is Zabul Safa. He was the Iranica, Encyclopedia Iranica, who died in Germany later on because of fundamentalism came in. So he always says that it comes from the whole theosophy is this tasawwuf, the concepts they come from India. Anyway, let's not divert. We are digressing now. So let's come down to your book. And first of all, tell me one thing. I'm a romanticist as a writer, as a poet, as a thinker as well, because I feel it peddles. You can peddle life very nicely if you are a bit of near. You are longing for romance, longing for sense of wonder, good things around. As per reviews I was reading, your book has a very grave, wonderful reviews. This aesthetics part, this romance part, does it have any bearing on your writings, or it is naturally there in whatever sum it is into your psyche and the writing skills? See, the book essentially it is it does not tread on the romantic or those areas. It is kind of a serious book. Like there is no romantic aspect in it. Okay. Like all of it is on existential levels, or There's an yeah, existential romance also, na? I mean, like yeah, there is, like you have Mahadevi Verma. My poetry also जो भी मैं लिखता था, but existential romance. all the stories are kind of tough Oh, in this sense. There is no like one of my publisher itself, he jokingly told me when he read the book, why are there no happy married couples in your stories? So I don't have an what do you answer for that. Maybe I have not seen anyone. so So but maybe are you married? Are you? You're no, quite no, young no, now. no. Yeah, You're I'm not 26, married. 26, 27, 27. 26, 27. Why? Yeah. Gen Z. Yeah. Yeah. So mostly all of the stories are serious in nature. Serious in the sense like they are no happy endings. And मुझे एक चीज याद है, मैंने एक बुक पढ़ी थी स्वदेश दीपक की. You might be knowing he was a playwright, Indian playwright स्वदेश दीपक. उन्होंने हिंदी में काफी प्लेस किए हैं. कहाँ के हैं? इंडिया. हम लोग तो वी हैव ग्रोन इन थिएटर. मोहन राकेश इन्हीं बादल सरकार इन्हीं लोगों के साथ ज्यादा था हमारा. यह हो गया. हाँ, so आई डोंट. सतीश दीपक थे, बट लेजेंड्स में तो वही थे हमारे. पांच सात आठ लोग थे. हाँ. हाँ, तो उनमें भी जैसे उनके एक फ्रेंड थे, वो राजेंद्र प्रसाद एक राइटर थे. उन्होंने पूछा, राजेंद्र प्रसाद. why do you always hunt your characters with a gun? So जैसे उनकी हर स्टोरी में कोई कैरेक्टर मरता था, वैसे ही मुझे लगता है मेरी स्टोरीज में कोई कैरेक्टर कोई खुश नहीं है शायद. सो वॉइड कहीं ना कहीं हर किसी में कुछ है, which is not letting them be happy, और उस टाइप से. Maybe this is an exploration as per the Oriental concept of void. This is an exploration. It's like that you are just looking at the sky and the clouds are there, and once the clouds go away, and then it's an azure sky, and higher and higher and higher. Moment you are a 26 or young boy, and gradually when you grow into all, there's an exponential growth around you in the mind and your psyche and your consciousness. Maybe things, it's a dynamics. You change every day. Things will Exactly. change. But as of So now, there are no such stories in my book. there's no such story. But Uh, still, I was trying, because being a romanticist by temperament, I was trying to derive romance from some of your paragraphs because I have not read the stories. I was yeah. feeling good about, there were Grammar of the But White. I'm sure then you will like the story that you will like the most is Denial when you get a chance to read the book.
because it is about an elderly couple living But alone. denial, as per the reviewers, they have presented it very horrifically. I mean, they have presented a grotesque model about there, but I don't think your writing would be that, because I know your sensibility. You are talking to me. I can a bit of reading. I can understand, but I don't think you have gone to that. Have you gone to that far that it has become a kind of a? Or, It is up to you to decipher that thing after reading. no, but what do you feel? Because you said that you would like that. I don't think there is any romance in that story. No, there isn't. So let's know about. Let's open the story. Yeah, denial. Then, so basically, it is a story about an elderly couple living Sorry, I alone. am taking this. This is mannerlessness, but I am very far from you, so I can't share you with this a cup of fix. No, no, it's fine. It's fine, sir. Thank you for offering कहाँ a whole. टेक्नोलॉजी में कैसे बुद्धि एआई में करना है क्या सर तमक में कैसे है कि ऐसे, बट क्यों अब तो होलोग्राम्स होलोग्राम्स हो गए हैं, तो मे बी इन द कमिंग टाइम वी कैन शेयर मील्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. अच्छा, ठीक है. कमिंग बैक टू द स्टोरी डिनायल. सो इट इज अबाउट एन एल्डरली कपल जिसमें कि जो वाइफ है, शी इज बेड रिडन and her husband is taking care of their children. The only child is living away from them in some other city or country. So this story is divided into 7 parts, the 7 days of a week. So it progresses through Monday to Sunday. What happens in those days is something, that is for you to see, but I cannot reveal too much about the story, what happens, otherwise I'll give it away, all the thing. So it is Okay. just how those two people, communicate with each other or tend to each other living alone, and what happens at the end of the story. And There's no there is one more story written in the backdrop of Kashmiri Pandit Exodus called The Betrayal. So it is yes, written betrayal complete. is something which I would like that you explore it, because I don't know the betrayal word you are using for what, for everything, for the apparatus, for the government, for the people around. uh, Apart from that title, I mean, you have a liberty to use it, but it has a very I think when I read a review, it had a great imagery of that loss and that hurt, and that I think betrayal is the same story in which that one brother doesn't tell another brother that I'm moving out of her Right, wife. right, right. Exactly, exactly. Yeah. It put me to tears. It put me to tears, because I visited a camp once, because I used to go to my Masi's place. They were there kind of the West वारिया ना जहाँ अंत थी, मतलब बहुत बड़ा हाउसेस था, सब कुछ था. और फिर मैंने देखा वो लोग भी बेचारे, they also came into the camps. Or one fine morning when I visited the camp, I saw people, a boy, a young boy, not boy, it was an elderly, he's talking to himself like this, like this. So immediate, it triggered the landscape of Haram to me. The meadows, the pastures, the cattle, the torrents, and the apples. तो सडनली एक आदमी वहां से उठ के इन अ वेरी एलियन प्लेस, बिच्छू बिच्छू तो चलो दैट इज अ स्टोरी, बट ही इज अ काइंड ऑफ, इट्स लाइक दैट पैपियन स्टोरी ऑफ पैपियन. He is being put on some island as an imprisonment, and his mental abilities. So your story is very moving. It's very touching, but it is hard, very hard. Please tell us about this. Let's open up the story. सो मैं इसका एक बैकड्रॉप दे देता हूँ इसमें कि आइडिया कहाँ से आया. लाइक हमारे जितने भी घर वाले हुए हैं, वो हर्ड स्टोरीज अबाउट एक्सोडस, हाउ द अबाउट द नाइट व्हेन दे लेफ्ट. बट आप देखेंगे कभी भी घर वाले पूरा खुलते नहीं है, वो पूरी चीजें बता नहीं सकते कि क्या क्या व्हाट वेंट एट दैट टाइम. कि वो थोड़ा, क्योंकि वो पासिंग नहीं है, बच्चा समझ के कि हाउ इट विल अफेक्ट हिज, यू It was नो. Append's mind. तो वो बताते हैं कि ठीक है, देयर वर किलिंग्स, देयर वर स्लोगन्स एंड वी लेफ्ट. बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड एट द ग्राउंड लेवल, सबकी कितनी कितनी अलग कहानियां हैं. लाइक मेरे को एक पता है कि किसी मेरे जो हमारे फैमिली थे वहाँ पर, उनके जो पड़ोसी थे, लाइक दे वर किल्ड बाय द टेररिस्ट.
सो इतना खौफ था कि उनका जो क्रीमेशन है वो क्रीमेशन में भी नहीं जा पाए, रातों रात चोरी चोरी एक दो लोगों ने उनका वो कर दिया क्रीमेशन, दे कुड नॉट इवन गो ओवर देयर। फिर सिमिलरली जो मेरी जो बुआ है उन्होंने बोला, मैं सबसे पूछ रहा था कि जब आप भागे, लाइक व्हेन आपको भगाया गया वहां से, आग लग रही थी, ये सब हुआ, व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट यू वांटेड टू कैरी? अब आप भाग रहे हैं घर से, आप वो ऐसी कौन सी चीज होगी जो लास्ट में अपने घर से पकड़ के निकलेंगे कि ये मुझे साथ लेना है? तो मैंने वो कुछ कुछ अपने एक दो फैमिली मेंबर से पूछा था, तो मेरी जैसे बुआ है उन्होंने बोला मैंने सबसे पहले सारे फोटोग्राफ्स को पकड़ा कि यही यहाँ की लास्ट निशानी है जो याद दिलाएगी। Memories. अगर फोटोज यहाँ चले गए मेरे को कुछ याद नहीं रहेगा, उनको बहुत लगाव है। वैसे ही मैंने एक से किसी से पूछा था या किसने मतलब कि ऐसी कौन सी चीज थी जो आपने पकड़ी? एक ने बोला वो तारपुलिन, वो तारपुलिन होता है ना, सो दैट शेड टाइप का, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, Oh, I see. लाइक अ शीट। Sheet. Oh, okay. हाँ, एक ऐसे ही कुछ उन्होंने बोला था कि शेड बेसिकली कहीं पर जाके अगर यहाँ से भागना है, एक टेम्पोररी अच्छा, हम कहीं she would take a तो, shed. हाँ एट द शेड। तो वैसे ही अलग अलग चीजें थी। फिर मेरे को किस चीज का दुख भी हुआ, जैसे मेरे फादर मुझे बताते थे कि उनके पास एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी थी, अपनी एक कलेक्शन वहाँ कश्मीर में। तो उनको सबसे ज़्यादा दुख हुआ है कि मेरी सारी किताबें जल गई वहाँ पर। मैंने इतने Oh, शौक से कलेक्ट किया था, इतनी सारी किताबें, फर्स्ट एडिशंस, बहुत सारी किताबों के फर्स्ट एडिशंस जो कहीं मिलते नहीं है वो रखे थे, वो सारे हो गए। मैं वो सोचता हूँ कि कितना सारा वहाँ कि क्या-क्या वहाँ हुआ है। अब वैसे ही इसमें एक स्टोरी, मुझे एक बात पता चली, मैं एक बार ऐसे अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, लाइक जेंजी है वो भी, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स कि क्या है क्या नहीं है अबाउट कश्मीर। तो उसने मुझे बताया था कि ऐसा कि एक भाई ने भाई को निकलते समय नहीं बताया, बोलता है कि तू तो, तेरे को क्या कि वहां पर ऐसा था जब रात को निकले, वो बस में इतनी जगह ही नहीं थी, आपका तो एक भाई ने आपका बोला कि पहले हम आराम से निकल लेते। सत्यार्थ, आपका कोई कॉर्ड तो नहीं टच हो रहा है? फ्रीजिंग आ रही है बीच में आपकी ना, उसकी पिक्चर की फ्रीजिंग हो रही है, कोई ओके, कॉर्ड तो अच्छा नहीं अच्छा, टच हो रहा है अभी कुछ अभी ऐसा ठीक? नीचे? अब नहीं ठीक नहीं, है। अभी ठीक है क्या? हाँ हाँ, आई थिंक इट्स फाइन। लाइव के बाद ये शायद सही हो जाएगा। ओके। सो वही है, उसमें मेरे को उसने, हेलो हेलो। हेलो, हाँ, यस यस प्लीज। हाँ अभी ठीक है क्या? हाँ, आई अभी तो थिंक ठीक है। हाँ देयर इज सम इशू ऑन योर एंड। हाँ हाँ। अरे तो मतलब वही स्टोरीज, डिफरेंट स्टोरीज कितने सारे हैं। हाँ तो हाँ, बेसिकली प्लीज ये प्लीज जस्ट गो ऑन। आइडिया था कि जब हाँ, जो मतलब कश्मीरी पंडित फैमिलीज में से भी जितने निकले, कि ऐसा भी सिचुएशन अराइज हो गई कि वन ब्रदर कुड नॉट टेल अदर ड्यू टू But द why? Why was it? Why was it? I mean, they have been living there since thousands of years, a generation to generation. Why this psyche of one brother doesn't telling other brother? What was? I don't understand this. आई डोंट नो, लाइक वो क्या था उसमें, वो फियर उस समय, कॉन्सिक्वेंसेस जो जो सिचुएशन अराइज हुआ है, यू कैन One नेवर becomes टेल अबाउट। selfish in the time हाँ, of danger. One becomes selfish. आप हमेशा अपने बारे में सोचोगे पहले कि Okay. अपने को कैसे बचाएं, ये मे बी लाइक दैट। तो मैंने सोचा इस चीज को मैं स्टोरी के फॉर्म में कैसे बताऊं। तो दिस केम टू मी कि लेट इट बी थ्रू अ साइकेट्रिस्ट। ये इसको, दिस विल हॉन्ट हिम, इसने बहुत गलत किया है, नाउ दिस विल हॉन्ट हिम, ऑल्दो मुझे पता नहीं होगा कि दिस जस्ट अ फिक्शन, कि इस इंसान को जम्मू आके क्या हुआ होगा, वो सारा हाँ, मैंने डेवलप किया कि ही okay. विल गो फ्रॉम दीज रिप्रेस्ड मेमोरीज विच विल हॉन्ट हिम। तो ही विल गो टू अ साइकेट्रिस्ट। तो मैं, जो ये स्टोरी है, इट इज टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन अप्रेंटिस ऑफ अ साइकेट्रिस्ट। एक साइकेट्रिस्ट जो जम्मू का है, डॉक्टर शर्मा, ही गोज एंड विजिट्स दिस कैंप्स। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बीमारियां, अलग अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ आ रहे हैं, साइकेट्रिक इलनेसेस हैं। तो उसमें से भी एक पेशेंट आता है अपनी बीवी के साथ, तो ही कैन नॉट स्पीक, every time his wife is speaking for him, this has happened to him, he is not able to sleep properly, he is not eating। तो वो डॉक्टर भी पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, वाइफ इज आंसरिंग फॉर हिम। तो डॉक्टर बोलता है कि अभी यू हैव पीपल हैव कम शिफ्टेड फ्रॉम अ कोल्डर प्लेस टू अ हॉट रीजन, सो दिस स्लीपलेसनेस या जो स्लीपलेस नाइट्स, इट इज कॉमन फॉर जो भी उसने पेशेंट्स देखे हैं। ही प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन और बोलता है कम एंड सी यू अ वीक लेटर। अगले दिन वो वापस फिर से आ जाती है, उसकी बीवी इस बार अकेले आती है, एंड वो उसको बताती है कि इसने रात में कुछ तो सीवियर किया है।
सो उसने जो उसका हस्बैंड है उसने रात में ही सेल्फ म्यूटिलेटेड हिज टंग, जबान काट ली अपनी, Oh, लाइक सोते समय। अब वो समझ नहीं आ रहा उसको क्या हुआ, फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो लाइक वट एवर द बैंडेज एंड ऑल दोस थिंग्स दे गिव। तो फिर वो साइकाइट्रिस्ट उसके पास आता है, उसको से बात करता है क्या है, इज नॉट एबल टू टेल। देन ही टेल्स द पेशेंट, यू डू वन थिंग, यू मेंटेन अ जर्नल, it doesn't matter what you write, whatever the dreams you get or whatever it is. So it is, there are also some dream elements in it, कि उसको oh, क्या ड्रीम आए हैं, कि उसको क्या दिखता है, कि वो बताता है कि आई एम गोइंग थ्रू अ विलेज, आई सी आई हियर साउंड्स, स्क्रीमिंग साउंड्स। तो वो एक पेड़ के पास जाता है, इट इज कवर्ड विद क्रोज, एंड एज mm, सुन एज ही गोज देयर द क्रोज फ्लाई अवे एंड 3 mm, bodies आर हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री, बट ही इज नॉट एबल टू डिसाइफर दैट थिंग। तो इवेंचुअली वो जो डायग्नोसिस है एक तरीके से डॉक्टर का, अप्रेंटिस का, कि कैसे कैसे आता है, वो mm. अल्टीमेटली अनरावल करती है स्टोरी कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द टॉर्मेंट दैट ही इज फेसिंग। तो उस तरीके से मैंने वो बनाई थी। So there's a great book on it. I've been in my public speaking. I always use that for youngsters, especially. Many lives, many masters. That and that Okay. is I mean, because that patient, the woman, she's not getting treated by a normal Carl Jung or the Brechtian. Sorry, this their theories. And the psychiatrist is one of the famous psychiatrists of those times. So what he does, and he finally goes through regression analysis and hypnosis, and then she travels to different centuries, different time spaces, and the characters are the same, but the era has changed. Sometimes the brother becomes the son, and then he becomes the neighbor. So I mean, in the process of that regression analysis, what he does, Brian, this lady is slowly, gradually relieved. She is relieved because her horror and her that state has come from very far from other janmas. So that's why he says, then he says that janma theory, the carnation theory of Orient is something. It's a beautiful. It opens up. It is his own experiences. It is actual happening, but he has kept the name of the patient hidden. One of the very good books, very good. Many मन lives, दोनों many. हमारे टाइम में एडवांटेज बहुत होता था। वो कंपनी होती थी ना, क्या कहते हैं उसको, बोलते थे वो एक व्हीलर कंपनी होती थी। तो व्हीलर Okay. कंपनी अंग्रेजों के जमाने से थी, तो रेलवे स्टेशनों पे ना वी यूज्ड टू गेट वेरी गुड बुक्स। राइट है, हाँ हाँ, उनका सबसे अभी भी शायद उनका रहता है, व्हीलर एंड कंपनी, दो हाँ, व्हीलर। चल या गॉट अभी इट। तो उतना मिलता नहीं रेलवे पे, बट हमारे जमाने में तो यूज्ड टू गेट ग्रेट बुक्स। पता नहीं लगता था, फिर बाद में पता लगता था ये कौन ऑथर है। Anyway, we'll go to, because you talked about the dreams, because I am also a kind of a trainer who can a bit of understand what dream system is. So I think we should move. First of all, you are this. What is that story name? If I pronounce it well, Synapse. synapses. Synapses. Yes. Is that synapses? Okay, Synapse. synapse. People are, I don't understand. He has written, it is written a very hard thing. As a writer, you will explain it. People are stripped of their ability to dream. Some of the reviewer has written about. Let us understand this whole. Actually, the entire situation turns then after that particular, that waiter comes in and his eyes is bland, and then that spot there. I don't understand. I mean, because I've not read the story, so I really want you to tell me, because I think there is a part of story is quite in a very different state, very advanced. It's a very probing, wonderfully a new, very fresh, and engaging concept. Yeah. So why I wrote this story, or why I began writing this story. So I'll just tell you briefly one thing. Like few years ago, there was a call for anthology by Westland Publishers. So they were making this book, first of its kind, Indian speculative fiction. It is a speculative fiction. You speculate anything like fiction, and there are different genres, whatever name you want to give. So they wanted entries, fresh entries. So writer, either you have an idea, you write the story, or else somebody asks you
to write something for a particular, catering or tailoring to different editions or themes. So it was a theme based Indian speculative fiction. अभी इसका आइडिया कहाँ से आया? मैं इसी में इधर बैंगलोर में ही, आई वाज लिविंग इन पीजी सम टाइम बैक. इसका कोई मेरे को कुछ पता नहीं है कि ये स्ट्राइक कैसे किया. इसका बस मोमेंट क्या हुआ कि आई वाज स्लीपिंग विद माय बैक टू द वॉल and then I turned around facing the wall, and in that instant I got an idea. That's how it happened. The idea, what happens if suddenly people stop dreaming altogether? क्योंकि वो at that मैंने आपको Because बताया you कि yourself, you are also a student of neurosciences, and Yes. that is also one of the reasons. Yeah. Yeah, exactly. Because I've been reading about all these things apart from the molecular and the structural thing, how a brain is or how it works. Like I am interested in the psychology, Freud and Jung. So I told you that I had read his books, Man and His Symbols, Dreams, Recollections and Memories. So from that time onwards, like it has been almost 6 or 7 years, like I have been jotting down my dreams, early morning dreams. So it happened in that sudden, like, even I don't know how it happened, it just came to me. So I just thought, like, why not pursue this theme? कि क्या होगा कि अगर एकदम से हमारे में से किसी को सी मैं आपको ऐसे बताऊं कि इसका रीजन भी अगर मैं साइंटिफिक तरीके से बताऊं, many of the scientific discoveries have been made by dreams. इसके मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं. जैसे जो हमारे में केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता है, मेंडलीव्स का, तो उसमें क्या हुआ है, मैं आपको एक उसकी बुक भी है और इसकी स्टोरी भी है. उसमें मेंडलीव ने जब वो पीरियोडिक टेबल बनाया, उसमें हर एक एलिमेंट्स उसने फिट किए, बट देयर वर सर्टेन एलिमेंट्स दैट वर मिसिंग. तो उसने वहां पर जगह छोड़ दी. ही सेड दैट आई डू नॉट नो कि which element will come here, but I had a dream that they have to be fit in these blocks, and later on those elements were discovered and they had their exact positions in those specific slots that he had kept. दूसरा किक्यूल्स रिंग, बेंजीन का जो हम पढ़ते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर, Benzene का structure. it Organic. came to that scientist in his dream. He saw a snake eating its own tail. तो सर्कल बना. The resonance का concept यहाँ जहाँ से आया, the benzene का structure, that was Forgotten, in but dream. हमने पढ़ी है ये साइंस बीएससी में ये. Like if you see, there are a lot of things that have the influence of the dreams. So in dreams, people say they are a kind of a doorway to the future. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि या आर्टिस्ट जो लिखता है, अभी आप सलमान रश्दी का अगर देखेंगे, जिसका अटैक हुआ था आई पे अभी रिसेंटली, जब वो सीवियरली इंजर्ड हुए थे, उन्होंने अपनी किताब नाइफ जो लिखी है, एक तरह से मेमोयर ही है, उसमें वो बताते हैं कि अटैक से एक दिन पहले उस रात को उनको एक ड्रीम आया. ड्रीम क्या आया? ही वॉज स्लीपिंग विद हिज वाइफ. तो उसको ड्रीम में ही वॉज इन दैट अरेना जहाँ पर वो ग्लैडिएटर्स जहाँ पर लड़ाई करते हैं. सो ही वॉज अ ग्लैडिएटर, ही वॉज फाइटिंग विद समबडी, एंड वो गिर गया, किसी ने उसको गिराया एंड स्पेयर से उसको मारने का हमला किया. ही वोक अप इन द ड्रीम इन द नाइट एंड ही कन्फेस टू हिज वाइफ कि मेरे को ऐसा कुछ स्ट्रेंज ड्रीम आया है कि मैं एक अरीना में हूँ एंड somebody is trying to kill me. And the very next day attack happened. So you see, ये वो नहीं बता रही है, मैं अपने हिसाब से कनेक्ट कर रहा हूँ कि उसको जो ड्रीम आया वो. The book I was talking about, in the morning, it was I'm reading nowadays, 40 Rules of Love. It's about Rumi and his dervish who was searching from him. So in the beginning, the writer, it is a 2007 novel written beautifully by Turkish, I've forgotten it. And there's a dream by Darwish that somebody, it is to happen yet. Darwish is connected. He's connected. He is invented this 40 Rules of Love. Rumi is a normal preacher, religious preacher, respected and given respect and status. But his forays into the spiritual realms have not begun yet. So Darwish comes, and Darwish knows I have to go him because he gets the voice. So he sees a dream in which somebody from the back attacks him
and his body is lying in a well, and then somebody is searching for him. He says, Shamas, Shamas, where are you? Shamas, where are you? Same dream is then enacted by, seen by, Rumi. Same dream. Dream is one, and then actually this thing happens because Rumi's son. There's one theory that Rumi's son and the other rich people over there, because they were very, they were not feeling good with Darwish treatment and language and aptness, so they planned his murder. So this is all which comes in the dream. It could also be said that Exactly, yeah. premonitions happen in one's life. Yeah, but So dream is a beautiful. yeah, and also the artistic creations, जो painters हैं, writers हैं, they also get most of their creative ideas from their dreams. तो अभी आपने स्टार्टिंग में इस इंटरव्यू की स्टार्टिंग में ही आपने एक शायद कामू का कोट पढ़ा था, समथिंग सिविलाइजेशन आर्टिस्ट का, Yes, that's a very wonderful. टू सेव द सिविलाइजेशंस, ऐसा कुछ. तो आप सोचिए, अगर ड्रीम्स खत्म हो जाएं, आर्टिस्ट कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग. वहां कुछ होगा ही नहीं. देयर विल बी नो न्यू नॉवेल्स, नो न्यू मूवीज, नो न्यू बुक्स, नो न्यू म्यूजिक, नो न्यू पेंटिंग्स. एक ऐसा वर्ल्ड कैसा होगा जहां पर कोई आर्टिस्टिक क्रिएशन नहीं है, कोई ड्रीम्स नहीं आ रहे हैं. हम क्योंकि ड्रीम्स का जो पढ़ते हैं, इट इज ऑल्सो अ वे टू रिलैक्स द ब्रेन, क्योंकि अब आवर ब्रेन इज नॉट मेंट टू स्टोर lots of information. It's not designed. It's not designed. You will go mad. So these dreams are a way to get unnecessary information relieved. So अगर ये सब नहीं हो रहा, it is a block. Everything you are seeing, the visual inputs, the auditory inputs, they are getting stored. How are they going to mess up with your mind? So उसमें स्टार्टिंग में जो वेटर आता है, he has lost his left eye. अब ये तो रीडर की अपनी इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, बट मैं एक चीज़ यहाँ से बता देता हूँ. जैसे हमारे ओरिएंटल जो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट आई का ब्लिंक करना, फड़कना, हम बोलते हैं कुछ आर्टिस्टिक तरीके से भी वो जुड़ा होता है. लाइक देयर आर दीज थिंग्स कि क्रिएटिव थिंग, अगर सम क्रिएटिविटी, अगर लेफ्ट टंग फड़क रही है, इज अ क्रिएटिव पर्सन और समथिंग, यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग क्रिएटिव. एक ऐसा एक आइडिया है. अब उसमें उसका लेफ्ट आई नहीं है, सो दैट मीन्स उसका कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव आस्पेक्ट भी खत्म हो रहा है. Like that. And there are some elements that I have placed in the story. ये स्टोरी भी उन लोगों को अच्छे से समझ आएगी that have a little bit of idea about how dreams work. आप ड्रीम में अपनी शक्ल नहीं देख सकते, आप ड्रीम में टाइम नहीं देख सकते, टाइम नहीं बता सकते. So these are certain elements that I have placed at certain places. जहाँ पर दो कैरेक्टर्स बात करते हैं, एक कैरेक्टर दूसरे से पूछता है, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम. वो बाहर बारिश से आया होता है, and he looks at his watch. He says, the water has seeped into the watch and it has become foggy. I cannot tell the time. Now it is up to the reader कि क्या वो सच में हुआ है या whether it is a dream scenario where he cannot tell the time. So उस तरीके से ये it is an open-ended story. Surreal and वो उसमें ना. Yes, exactly. But I am very much interested in one aspect, the dialogue between them. It is said that the writer is tormented. Something changes in the writer when he sees that left eye of that waiter, and something seizes in him. What has happened to writer after this interaction? नहीं, nothing. I don't know. ऐसा कुछ है नहीं इसमें. ये अच्छा, यहाँ पर गलत लिखते हैं रिव्यू वाले भी. हाँ, वैसा नहीं है. उसमें उन्होंने कुछ अलग तरीके से लिखा था कि लास्ट का जो सिनेरियो है, लाइक देयर इज अब ड्रीम्स तो है नहीं. What happens? एक टाइम पॉइंट पे people, the government with this, the help of scientists, they have come up with dream clinics. Now in that society, in that era, there are dream clinics that will help you. that I read somewhere. It was very good to know that will help you to induce dreams, right? अब जो आर्टिस्ट हैं, they will go over there, but उसका प्राइस क्या है? They will take away your memories. They will feed on your memories. The machine that is giving you dreams, how is it giving you dreams? कि आपने जो दिन भर देखा, जो भी inputs आए, auditory या buying your memory. हाँ, it is going through your memories कि आपके पुराने रिलेशन क्या है, और अपना एक एल्गोरिदम बना के as per your convenience वो cater करके आपको dreams दे रहा है.
बट आपका सारा मेमोरीज वहां जा रहा है उसके पास, तो उसका टोल क्या है? तो वो एक तरीके से इसमें अगर आप देखा जाए एक एआई का भी एस्पेक्ट आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दीज डेज जो हम यूज कर रहे हैं। हम हम्म, स्टोरीज अभी अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी के ऊपर बहुत बवाल उठा था, जो उसका फर्स्ट प्राइज जीता था उस पे किसी ने तो एआई टूल में डाला, एंड इट केम दैट मोस्ट ऑफ इट इज जनरेटेड बाय एआई टूल। सो वेयर इज द ह्यूमन क्रिएटिविटी? खत्म। वो एक एआई, एक मशीन ने ऐसी स्टोरी लिखी जो इंटरनेशनल अवार्ड ले रही है। सो हाँ, द क्रिएटिविटी हैज गॉन। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एक तरीके से वो दैट ह्यूमन क्रिएटिविटी but का जो क्वेश्चन जो है। people have now started I mean disliking this AI imagery and AI even अभी वो हो गया है शुरू, that is start नहीं people नहीं, वो पहचान ठीक लेते है, हैं। मैं हाँ हाँ पीपल पहचान लेते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह से ह्यूमन क्रिएटिविटी कम हो रही है। यू आर नॉट अप्लाइंग योर ब्रेन, यू नो एक्चुअली हम जितना ये जो क्रिएटिविटी है ना हमारी, ये ग्रेजुअली हमारी सबसे पहले तो कंप्यूटर ने ले ली, फिर हमारे मोबाइल ने ले ली। मोबाइल हमारा है ना, इसकी वजह से आज आप डॉक्टर के पास चले जाओ, गो टू एनी डॉक्टर, मेरे अपने फैमिली में डॉक्टर्स है, बट आई टेल यू दे विल नॉट टच यू। हमारे टाइम में जब डॉक्टर्स होते थे ना, वो कहते थे मुंह दिखाओ, फिर वो पल्स चेक करते थे, फिर ये चेक करते थे, फिर आईज चेक करते थे, और बहुत सारी चीजों पूछते थे, फिर बात करते। आजकल क्या करता है वो कि आप उनको रिपोर्ट, वो सारी सबसे पहले आपको रिपोर्ट मांगेगा, रिपोर्ट आपने चेक की और आपको टच भी नहीं करता है, मेडिसिन लिख देता है। तो एक तरह से वो मेडिसिन सेलर है। ही हैज बिकम, उसकी जितनी भी पढ़ाई है, वट एवर ही हैज स्टडीड, इट इज गॉन वेन, बिकॉज एप्लीकेशन नहीं है, देयर इज नो एप्लीकेशन। So I was once, I don't know whether you know, there's one very great ultrasound person, doctor. He is in Gandhinagar, Apollo. So I used to go to him. He used to tell me that यार मैंने ये इसलिए किया, I was a gastroenterologist. हमारा सेट ऑफ रूल जो है ना वही है, ये नाड़ी ऐसे है, ये नाड़ी ऐसे है, यहाँ ऐसे है। तो इंजीनियर जो है, इंजीनियर तो बेचारा 24 घंटे क्रिएट करता है, उसको करना होता है, तो उसके लिए चैलेंजेस है, उसका ब्रेन भी खुला रहता है। तो दैट्स व्हाई आई केम टू दिस। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट इंटेलिजेंस हमारी जो कंप्रोमाइज होना है वो काफी पहले से शुरू हो गई थी। अब एआई में वो एक पिनाकल पे पहुंच रही है, लाइक दैट। हमारे कॉलेज में एक किताब, हम जब साइंस कॉलेज पढ़ते थे ना, तो मैं उसको प्रिंस ऑफ वेल्स ही कहता हूँ, बिकॉज आई एम रोमांटिक मैन, मैं उसको पुराने नाम से ही जानता हूँ। तो उसको वहां पे हमारी एक बहुत छोटी सी कहानी अभी तक याद है, वो स्पून फीडिंग कहानी नहीं है। वो कह रहा था एक टाइम पे, उस जमाने में टाइपराइटर ही थे, इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं आए थे, तो यूज्ड टू से कि ये टाइपराइटर, ये इलेक्ट्रॉनिक, ये सब चीजें वन डे नेचर विल टेक इट अवे। व्हाट विल मैन डू दैट टाइम? उसका मतलब उस आदमी का कब का है, 70s में, उस किताब, पता नहीं किताब पहले की होगी, 70s में हमने पढ़ा। तो उस वक्त उस आदमी का ये अंडरस्टैंडिंग था कि ऑल दिस टेक्निकल मैकेनाइजेशन जो हुई है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेटिंग एंड एआई आल्सो, तो ये अल्टीमेटली ह्यूमन के लिए डेट्रीमेंटल ही होगी। तुमने एक बात बहुत प्यारी बोली, यू स्पोक वन थिंग वेरी गुड, दैट ह्यूमन ब्रेन इज नॉट डिजाइंड फॉर सो मच ऑफ दिस। मुझे लगता है ह्यूमन ब्रेन इसलिए भी डिजाइन नहीं है, तभी हम लोगों को आजकल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ये मेरा थॉट है। माय ब्रदर इन लॉ वाज एचओडी साइकेट्री हियर पीजीआई, तो मैं अपने लोगों से आदमी नहीं ना कभी पूछता, दूसरों से पूछता है। तो लेकिन मैंने ये अपने एंगल से ऑब्जर्व किया, ये जो मोबाइल का एक्सेसिव यूज है, जो डिपेंडेंस है, इसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है या इसके जो भी है फॉर्म, शायद ये उसके लिए उपयुक्त नहीं। तो दैट्स व्हाई फिर हमारे डिसऑर्डर्स वो होते हैं। चलिए एनीवे, क्योंकि आप देखें ना, हाँ मैं Again we are इसमें ऐड diverted. कर रहा हूँ, इट्स ओके। Okay. क्योंकि जैसे भी अभी ये फोन में भी आप देखेंगे, क्योंकि इसमें आपने छेड़ दिया है, हमारे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टाइम स्पैन में मिल रही है। ये है लाइक Instant. इंस्टेंट। सो लोड बढ़ गया है कि आपको अगर रील भी देखेंगे, इंफॉर्मेशन है यहाँ से भी वहां से भी, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में इतना सारा है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ये सारा आजकल whatever you are saying, all these psychiatric illnesses in ये, yeah, that is one of the causes. बट यस, साइनेस में बेसिकली आइडिया यही था मेरा कि एक ऐसा डिस्टोपियन सोसाइटी कैसी होगी, है ना? तो वो अच्छा, that's wonderful. No, I think you must get a prize for this. This is a wonderful story.
वंडरफुल स्टोरी, नेवर रेड अबाउट। हालांकि उन्होंने किसी ने उसको कंपेयर करा है किसी के साथ, किसी राइटर आई ने डू नॉट नो अबाउट कंपैरिजन, बट मेरे को ये अच्छा काफका है के कि साथ जिस एंथोलॉजी, जिस पब्लिशर ने ये स्टोरी मांगी थी, so there were 300 entries from all over India, and this story was selected in the top 25. Although ये फाइनल बुक में नहीं आई, but still it made it to the top इट इज 25. अबाउट Synapse. सार्मागो जो है ना काफका की, blindness. वाइट ब्लाइंडनेस, वाइट ब्लाइंडनेस जो सबको हो जाती है, तो वैसे ही लॉस। बट दिस इज समथिंग वेरी वंडरफुल। ड्रीम्स पे तो बहुत कुछ इंसान सोचता है, बट क्रिएट करना इसमें बहुत बड़ी बात होती है। एंड इट इज, मुझे तो ये प्राइसलेस स्टोरी लगती है। तो दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल स्टोरीज। तो मैं अब बर्थडे पार्टी पे, बर्थडे गिफ्ट पे आना चाहता हूँ। मैं थोड़ा रोमांटिसिस्ट हूँ, मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज देयर इन द बर्थडे, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग इन द बर्थडे गिफ्ट? इट इज बर्थडे और बर्थडे गिफ्ट? Birthday gift. ओके। So birthday gift is basically a political short story. मतलब political इसमें बैकग्राउंड है। एक विलेज है, कोई एक गांव है, गांव में किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वहां पर उसकी अभी बॉडी आई नहीं है। तो दो जो भी गांव वाले हैं, दे आर वेटिंग। तो वो एक बंदा बोलता है अब तो शाम हो गई, वो मतलब जैसे हम बोलते हैं संध्या वक्त हो गया, ऐसे शाम, तो अब तो क्रीमेशन भी नहीं हो सकता इस टाइम के बाद, अब कल आते हैं हम इसकी बॉडी का वेट करने जब आएगी। तो अल्टीमेटली बॉडी तो मिलती नहीं है, बट एंड में पुलिस वाले आते हैं कुछ। वो बोलते हैं कि आपके जो ये जहाँ एक्सीडेंट हुआ था आपके हस्बैंड का, तो हमारे को उस जगह से कुछ चीज़ें मिली है। तो वो उसमें एक गिफ्ट लाया होता है, मतलब बेसिकली एक उसके बेटे का बर्थडे होता है उस दिन, जिस दिन उसकी डेथ हो गई होती है, जिस दिन उसको आना होता है। तो कुछ उसको बर्थडे गिफ्ट का कुछ मिला होता है, वो दे देता है उसकी विडो को, जो विडो है, पुलिस वाला विडो को देता है कि वी फाउंड दिस एट द एक्सीडेंट साइट। तो उसके पहले मैं बताता हूँ बट बेसिकली ये कहाँ से चल रहा है कि इसमें अलग अलग, जैसे न्यूज़ ऑफिस, न्यूज़ रूम है, वहाँ पर किस तरह से ट्रीट करते हैं इस सिनेरियो को कि एक डेथ हो गई है तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है, वो अपने कॉन्डोलेंसेस दे रही हैं कि यार हमारी तरफ से दे, वो हमारी तरफ से कॉन्डोलेंस दे दो। ऐसे एक छोटी सी एक कहीं पर जो ट्रेजेडी हो गई है, अलग अलग कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है उसको। एक्सप्लॉइटेशन है। कोई न्यूज़ रिपोर्टर जा रही है, वो पूछने जा रही है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो ट्रैफिक वाले बोल रहे हैं हमारा काम नहीं है जी, आप उनके पास जाइए। मतलब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, अल्टीमेटली कोई बॉदर नहीं कर रहा है इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। तो एक तरह से वो सारा इसमें सिनेरियो, और एंड में अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट द व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम न्यूज़ में, मेरे को आइडिया आया था कि न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, सो गवर्नमेंट ऑफर्स सम एक्स ग्रेशिया अमाउंट, तो एंड में उस वो लाइफ का वो एक्सग्रेशिया ही है बेसिकली। तो जब वो उस बच्चे को, वो माँ विडो को गिफ्ट देता है, तो बच्चा पूछता है ये क्या है, तब माँ चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है। फिर बाद में वो बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए का आपको ये अमाउंट दिया इस ट्रेजेडी के लिए, वो भी पकड़ाते हैं। जब वो पकड़ाते हैं, बच्चा पूछता है फिर से मम्मी ये क्या है, फिर वो बोलती है यही तेरा बर्थडे गिफ्ट है। मतलब वो मर गया, वहां से वो मर गया, तो उसकी लाइफ का एक तरीके से वैल्यू क्या है उसका, इनसेंसिटिविटी जो हमारी हो गई थी, इंडिफरेंस जो हमारे वैल्यू सिस्टम पे। yeah. वैसे ये आज का नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की अगर आप कफन पढ़ोगे स्टोरी, जी हाँ, उसमें भी सेम है, यू मस्ट हैव रेड इट। उसमें भी वो कफन के लिए पैसा इकट्ठा करता है, तो फाइनली वो आदमी का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इससे प्रॉब्लम होती है, तो अल्टीमेटली ही गोज एंड बूज समवेयर एल्स। और सेम वे और भी कुछ, हरिकृष्ण कोल की कहानी है बड़ी जबरदस्त, ही वाज ऑन माय शो। और नाउ इट इज मॉर्निंग समथिंग, ऐसा कुछ उनकी नई शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है ना? हाँ, यस, आई हैव टू रीड दैट बुक येट। एक कहानी मुझे और इसमें बहुत प्यारी लगी, ऑल्दो उसका ओपनिंग अब कैसा है, अनलेस आई रीड दैट बुक, दैट स्टोरी, बट कंटेंट उसका बहुत अच्छा लगा। दैट्स ये क्या इज इट, ये ललदेद वाला जो है, व्हाट इज द टाइटल? Bard's Return. The Bard's Return, right. Tell us something about it. हाँ, इसका तो एक तो मैं, जो मेरे ग्रैंडफादर है, लाइक ही इज डिवोटी भी बोल सकता है, ही इज अ फॉलोअर ऑफ ललदेद। काफ़ी सारा उन्होंने उनके बारे में पढ़ा भी है एंड प्रमोट भी किया उसका, तो मैं सुनता रहता हूँ उनसे भी। फिर काफ़ी सारे हमारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में भी काफ़ी सारे लोग हैं हु आर वर्किंग ऑन द वर्क्स ऑफ ललदेद। Works of Lal Ded. हाँ, वर्क्स ऑफ ललदेद। अब इसमें
आपको भी पता ही होगा, इसमें बीच में अलग अलग कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, दो अलग अलग फैक्शंस में रिगार्डिंग सम ऑफ द वर्सेस ऑफ ललित। कोई बोलता है कि इसका मतलब ये है, कोई बोलता है कि उसका मतलब वो है। ठीक है, अब मैंने इसमें क्वेश्चन किया यार, बिकॉज ये जो ललित का है, इट इज एन ओरल ट्रेडिशन, एंड ओरल ट्रेडिशन उन्होंने वो कभी डॉक्यूमेंट किया नहीं, ना किसी ने उनसे सुन के कहीं ऐसा लिखा। तो वो जो किसी ने सुना, वो सुन के आगे फॉरवर्ड हुआ है, जस्ट ओरल ट्रेडिशन के तरीके से। बट ओरल जो ट्रेडिशन है, इट इज ससेप्टेबल टू चेंज। कहीं इट इज डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी, ऑन द पीपल, किसने सुना, किसने सुनाया। तो मैंने बोला यार, ये जो इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं कि ठीक है यहाँ लड़ रहे हैं, बट नो बडी कैन गारंटी विच इज द एक्चुअल थिंग, राइट? बिकॉज गारंटीड इसमें चेंजेस आए हैं, जो ओरिजिनल जो बोला गया है वो नहीं है। तो मैं इसको रीइमेजिन करता हूँ कि क्या होगा कि एक टाइम पे, एक फ्यूचर में, जो कश्मीरी पंडित सोसाइटी है वो आपस में डिबेट करते हैं कि यार हमारा जो एक एस्ट्रोलॉजर था बहुत पुराने समय का कश्मीर में, उसने अपने एक स्क्रोल में लिखा था कि एक टाइम आएगा व्हेन द मदर, मैंने इसमें ललित को द मदर लिखा है, व्हेन द मदर विल रिटर्न एट दिस अपॉइंटेड टाइम, एट दिस अपॉइंटेड आवर, एट दिस अपॉइंटेड प्लेस। तो अब ये सारे जम्मू में है, क्योंकि सारे डिस्प्लेस्ड हैं, कोई बाहर है, कश्मीर में तो कोई है नहीं। तो अब ये उस दिन, वो दिन आ जाता है, ये सारे वेट करते हैं कि लेट्स सी कि जो एक ज्योतिष ने उस टाइम पे, हमारा जो रेवरेड ज्योतिष था, उसने कहा था कि ललिता इस बार आएगी, लाइक रीइंकारनेटेड। हम सारे तैयारियां वैयारी करते हैं मंदिर में, जम्मू में किसी मंदिर में करते हैं। रात हो जाती है, कोई नहीं आया, फिर सारे लोग बैठते हैं। अब उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इसलिए बैठे हैं देखने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, कि यू गाइज आर फूल्स, कि ऐसा कुछ नहीं होता, नोबडी इज गोइंग टू कम बैक। इवेंचुअली दे ऑल स्टार्ट टू लीव अंटिल सनराइज कम्स। तो सनराइज होती है, तो मतलब उनको सुनाई देता है वहां से किसी बच्चे की आवाज, छोटी लड़की की आवाज। अब मैंने यहाँ पर उसका एज जो है ललित का, हम हमेशा इमेजिन करते हैं व्हेन शी वाज अ वुमन, राइट? ललित व्हेन शी वाज अ वुमन, बट मैंने उसको निकाला एट द age when she was a teenage girl, when she was forced out of her house, at that time. As a teenage girl, she revisits this city or this particular place, छोटी सी लड़की की फॉर्म में। तो ये सारे लोग उसको मतलब जैसे तैसे पूछ समझ जाते हैं कि ये वही है। ये बोलते हैं, मदर आपको इतना लेट क्यों हो गया आने में? तो ये बोलती है, मैं तो टाइम पे ही आई थी, लेकिन शी हैड गॉन टू कश्मीर, जहाँ इसका अपॉइंटेड आवर था। वो कश्मीर गई, वहां घर घर फिरी, इसको कोई अपना मिला ही नहीं वहां ललित को। मतलब इसको आना था वहां, इसको लगा सारे वो कश्मीरी पंडित वहां होंगे। ये एक घर में गई, वहां कोई नहीं है, एक दूसरे घर में गई, वहां कोई पंडित नहीं है। तो इसको इसीलिए यहाँ आते आते टाइम लगा। इसने अलग अलग लोगों से पूछा कि ये लोग जो यहाँ रहते थे, वेयर आर दीज पीपल नाउ, लाइक ऐसे। तो अल्टीमेटली उसको देर इसीलिए हो गई आते आते। फिर यहाँ पर कुछ लोग अपने कश्मीरी जो कम्युनिटीज के आते हैं, ये उसको बोलते हैं कि मैंने आपके पोइम्स के बारे में ऐसा लिखा है, आई एम कंटिन्यूइंग योर ट्रेडिशन। तो फिर ये एंड में बोलते जो भी है, मतलब बेसिक उनके बीच में फिर कन्वर्सेशन होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो बट मेरा ये ऐसा, मैंने सोचा था कि क्या होगा कि अगर वो वापस आए एंड ये जो लोग हैं जिन्होंने इनके बारे में लिखा है उसको बताएं, हाउ वुड शी रिएक्ट एट द प्रेजेंट सिनेरियो, कि जो उसने तब बोला है कि वेदर दैट थिंग मैचेस टू द ओरिजिनल और नॉट। वो खुद सरप्राइज हो जाएगी, क्या ये मैंने सच में ऐसा बोला भी था या नहीं, या चेंज कुछ आए हैं, कि चेंज आए हैं तो क्या चेंज है। तो ये एक थोड़ा सा आइडिया था। ब्यूटीफुल, इट्स वंडरफुल, वंडरफुल, आई रियली लव्ड। और उसमें वो ट्री वाला जो है ना, ये फेडिंग इनटू द ग्रेट ट्री, वो बहुत अच्छा आपने फेड आउट उसको कर दिया। फेड आउट कि वो जाएगी कैसे, वो अल्टीमेटली उसी मंदिर के पेड़ में वो समा गई। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इट्स अ हिस्टोरिकल, और ये मास्टरपीस है। दिस इज अनदर मास्टरपीस। बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग, I have done many programs and one of the greatest scholars ललित पे, क्योंकि I am myself because हम अब करते करते रिसर्च ही करते हैं। मेरा हर प्रोजेक्ट रिसर्च का ही होता है। मैं पहले खुद बहुत रिसर्च करता हूँ, फिर मैं काम करता हूँ। Exactly. तो मुझे, मैंने देखा है कि इवन 16th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में ललित थी, तो 15th 14th सेंचुरी 16th सेंचुरी में भी जो एक्चुअल ओरिजिनल ललवाक है, ओरिजिनल ललवाक, इट्स नॉट कंप्लीटली, मतलब ओरल थी, बट अल्टीमेटली वो
एक तरह से वो जैसे होता है ना, एक जैसे हम श्रुति एंड वो कहते हैं, स्मृति, वो श्रुति, पूरा एक yes. हाँ उसको फॉर्मेट में थी, मतलब उसको लेफ्ट राइट नहीं, रिलीजियस था, नॉट रिलीजन एग्जैक्टली, इट वाज रिलीजियसली टेकन, घरों में रिलीजियसली चलता था, वो एक सेंचुरी तक तो वैसा ही चला। और उस सेंचुरी में कोई राइटर है, वो उनकी डेथ हो गई, 2 लोगों की, तो एक तो शशि शेखर तोषखानी, राइट मतलब राइट राइट। उनका जाना तो बहुत बड़ा लॉस, मतलब वो एक उस अब उस जनरेशन में कोई नहीं है, उस लेवल का नहीं है कोई, बहुत उसका ब्रेन अभी भी बहुत तेज था। ये हरिकिशन कोल की कहानी पे भी मेरी में आए थे, वो सिमिलर एक स्टोरी थी, वो 3 वो होते हैं गिरफ्तार, वो उसकी लाश, एक हिंदू एक मुसलमान एक कुछ समथिंग लाइक दैट। एनीवे, तो अब इसमें इंटरपोलेशन, राइट राइट। हाँ बोलिए, यू आर सेइंग नहीं समथिंग। आप बताइए, मैं बाद में बताऊंगा, आप बोलिए। इंटरपोलेशन जो है, इंटरपोलेशन बहुत हुई है। प्रोफेसर शफी शौक भी मेरे प्रोग्राम में थे, दे सेड इंटरपोलेशन विल हैपन, मैं कह नहीं, देखिए 14th सेंचुरी एंडिंग में हिंदू मुसलमान नहीं था। 14th सेंचुरी में ऐसा था कि जो हमारे जो बट ब्राह्मण भी नहीं था उस जमाने में, बट था। बट कौन था? बट मीन्स दे वर द टीचर्स, दे वर टीचर्स ऑफ संस्कृत, टीचर्स इवन ड्यूरिंग द बुद्धिज्म, दे वर द टीचर, उनको बट बोलते, बट संस्कृत शब्द है। तो बट वर्ड था, फिर ये बट आस्ता आस्ता डिसइंटीग्रेट हो गया, क्योंकि रुक गया एक जगह, काम नहीं किया। तो ये जो ब्राह्मणिकल क्लास, पंडित क्लास है, बाद में चीजें आई। तो वहां पे जो है उस जमाने में तर्क बोलते थे, तर्क, ये जो कुछ राजे थे ऊपर से, बाकी नीचे शिविज्म चलता था पूरा। तो उस वक्त वो बट बोलती है, बट बोलती है। और उस जमाने में हिंदू मुसलमान, जैसे एक कॉपलेट है, मोजान हिंदू मुसलमान, जैसे ये कॉपलेट है, ये रेलिवेंट ही नहीं है अगर, लेकिन हाँ हमारे काम आ जाता है, लोग जुड़ जाते हैं, अच्छी बात है। इंटरपोलेशन, उसमें एक्चुअल वाक कहते हैं 36 35 36 और 35 वाक ओरिजिनल, और हर घर में, बिकॉज 700 साल की गुलामी थी आफ्टर 14th सेंचुरी, और इंडिजिनियस अपैरेटस शैटर्ड। तो ये लोग आए, सब लोग बाहर से आए, एवरीबॉडी केम फ्रॉम आउटसाइड। हम लोग बोलेंगे हमारे कोई नहीं थे, दे वर ऑल आउटसाइडर्स, टिल फाइनली शेख साहब आए, न्यू गवर्नमेंट आई, इंडिपेंडेंस आई, तब तक सारे 7th सेंचुरी बाहर थे। अब मुस्लिम खुश होंगे कि वो मुस्लिम रूलर थे, नहीं, वो उनके लिए आप एलियन ही थे। हाँ थोड़ा रिलीजियस रहता है कि एक जगह जाके एक तरह से पूजा करेंगे या वो करेंगे। सो ललदेद का जो पीरियड था, और वैसे ही नंदरेश की भी इंटरपोलेशन हुई, बट आपकी कहानी उससे एक स्टेप हायर है। यू हैव डन अ वेरी साइको एनालिसिस ऑफ दिस वंडरफुल थिंग, और बहुत प्यारे तरीके से आपने कम्युनिकेट किया। ये 2 तो मुझे बहुत जबरदस्त स्टोरीज लगी। इसमें ललदेद वाली में एक चीज ये भी है कि जब ये मंदिर में तो सब वेट करते हैं, इनका जो बच्चा होता है, जनजी है बोल सकते हैं, जो बाद में पैदा हुआ है, वो पूछता है आप वेट किसका कर रहे हैं, ललदेद का। अब इसको ये पता ही नहीं है, जब ये बताते ललदेद, इसको बच्चे को पता नहीं है वाई, क्योंकि आप देखिए किसी भी कश्मीरी पंडित घर में ललदेद का फोटो नहीं है, साथ मैक्सिमम है ही नहीं। वाई इज इट नॉट देयर? दैट्स अ क्वेश्चन। कि हम सबका रखा है, हमने भगवानों का यहाँ रखा है, सबका रखा है, बट अब देखिए मैक्सिमम ऑफ द कश्मीरी पंडित हाउस होल्ड दे डोंट हैव अ सिंगल फ्रेम ऑफ ललदेद। तो बच्चे को पता ही नहीं है वो है कौन, वो दिखती कैसी है। हम बोलते बोलते तो वाक वाक है, ललदेद है, बट वाई इजंट देयर अ सिंगल पिक्चर? उनका तो कोई मंदिर भी, हाँ You are asking this question, the Gen Z boy is asking this questions to, हाँ, because he doesn't know. मतलब ऐसे Actually, कि एक्चुअली हिस्टोरिकली हबा खातून का भी कोई कहीं पिक्चर नहीं है, और इसका भी कोई पिक्चर नहीं है। रुबवानी जी का है, क्योंकि वो शी वाज फ्रॉम एन एलीट फैमिली। एक्चुअली 80% ऑफ जो लोग थे ना, जब वाल्टर लॉरेंस आया तो पता लगा कि लोअर लेवल पे क्या चल रहा है। जितने भी राइटर पुराने थे, या तो वो बहुत एलीट थे, या वो राजाओं के मेहमान थे। तो रियल लाइफ जो थी ना, एक्चुअल लाइफ ऑन द ग्राउंड, नोबडी न्यू। सो मेमोरी में वो चीज नहीं थी, बिकॉज 14th सेंचुरी में चित्रकार उस समय नहीं थे, अगर हुए भी होंगे। अच्छा, बीच में एक पीरियड ऐसा भी आया होगा जब ये इलोप हुई होगी, मतलब द मेमोरी वुड इलोप फॉर सम पीरियड्स। सो इट इज अ डिबेटेबल सिचुएशन एंड अ डिबेटेबल थिंग। मतलब हाँ वही है, मतलब क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो उसको, उस बच्चे को, मतलब वो भी पूछता है, इसीलिए तो ये सारी चीजें हैं जो स्टोरी में हैं। वो है ना, अब प्रॉब्लम ये है कि ललेश्वरी का तो, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट हर वाक, तो रूपभवानी तो डायरेक्टली अपने कॉन्टेम्पलेट करती है अपने उसमें। साई लाल, शी टॉक्स अबाउट सेम, साई लाल, मतलब शी टॉक्स अबाउट आई एम द कार्नेशन ऑफ द सेम, आफ्टर 3 centuries मैं फिर आई हूँ। तो देयर इज अ कनेक्शन, सम यूनिवर्सल कनेक्शन है वहां पे।
आपकी ये कहानी बहुत अवतार स्टोरी, ये टाइटल भी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये अवतार नहीं की नहीं स्टोरी। नहीं या नहीं, अवतार स्टोरी नहीं, जो लिखा है कि द स्टोरीज नेम इज वॉइड, द वॉइड। इस स्टोरी का ही टाइटल है द वॉइड। सो उसमें अच्छा, अवतार एक कैरेक्टर है। ओ सो आई द सी। तो अवतार अच्छा, की दिस इज कहानी बेसिकली। ओके ओके। आई थॉट मुझे पढ़ा नहीं तो वाइड। अच्छा, दिस इज द वाइड। So this is the last story in the book, and from ओके, where the book also derives its title, The Grammar of the Void. So ये खालीपन कहाँ से आ रहा है? ये जो जम्मू में या मैंने तो जम्मू में देखे हैं जो खाली घर हैं कश्मीरी पंडित्स के। बहुत बिकॉज जबरदस्त इमेजरी है। कश्मीर से कश्मीर से जो पहला एक्सोडस हुआ वो हुआ जम्मू तक। फिर यस। जम्मू के बाद सेकंड एक्सोडस हुआ, जैसे मैं निकल गया घर से बाहर, अभी बैंगलोर में, या बहुत सारे लोग हैं। अब पीछे रह गए खाली मकान। देयर आर अ लॉट ऑफ एम्प्टी हाउसेस जो कश्मीरी पंडितों ने बहुत ही मतलब चाव से बनाए थे वहां पर। जो उसमें एक स्टोरी इसी स्टोरी में है कि ये जो अवतार है, अवतार काक एक बंदा है, लाइक ही इज अ विडोवर। उसकी बीवी स्ट्रोक से मर गई होती है। ही इज ओनली सन, ही इज वर्किंग अब्रॉड। तो इसने दो मंजिला मकान बनाया होता है। तो ये हर बार फोन करता है कि व्हेन आर यू कमिंग बैक, ये तेरे लिए ऊपर जो घर वर बनाया है, लाइक यू कम एंड सेटल हियर, तेरे को पैसा यहाँ अच्छा मिल रहा है। तो ऐसा से फोन करता है। तो इसके एक दिन ही इज अ स्कूल टीचर, इसके दो दोस्त आते हैं अलग से। एक फॉरेन विजिट से आता है ऑस्ट्रेलिया से, एक जम्मू से ही आता है। तो एक तो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं कि क्या हो रहा है आजकल, क्या नहीं है। तो इसी में एक कैरेक्टर बोलता है कि दिस जम्मू सिटी, जिसको हम सिटी ऑफ टेम्पल्स बोलते थे, नाउ इट इज नो मोर अ सिटी ऑफ टेम्पल्स, इट इज अ सिटी ऑफ ओल्ड टाइमर्स। अब यहाँ सिर्फ बूढ़े बूढ़े बैठे हैं जम्मू में। यंग पीपल हैव माइग्रेटेड आउटसाइड in search of opportunities, like me myself, I am a witness to these things, I have seen these things, like मेरे पेरेंट्स आर देयर। खाली सारे बूढ़े बूढ़े वहां पर लोग बैठे हैं, बाकी सारे हम सारे तो मेरी एज के हैं, जो मेरे भाई बहन है बाहर है। सो हाउ डू दे फील, जो उनके अंदर का एक वॉइड है, दैट इज ऑल्सो अ वॉइड। तो अल्टीमेटली इसमें क्या होता है, वो जो अवतार है उसका बेटा तो आ नहीं पाता वापस। तो ही इज लॉन्गिंग फॉर अ फैमिली। सो ही गोज, और एक दिन उसको देखता है, वो एक जो हम कांदुर है ना, कांदुर, वो एक कांदुर की फैमिली को बोलता है तुम आओ, मैं तुम्हें जगह दूंगा यहाँ पर, मैं पैसा भी नहीं लूंगा, आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्टे हियर, जस्ट बी लाइक माई फैमिली। मतलब वो अडॉप्ट कर लेता है कांदुर की फैमिली को, क्योंकि उसका अपना बेटा नहीं आ रहा है। ही इज लॉन्गिंग फॉर अ फैमिली। तो यू सी ये कहाँ से है कि मतलब एक अकेलापन जो आ जाता है एक टाइम बाद। सोनापन। वो सूनापन फिल करने के लिए वो पैसा भी नहीं लेता है, बोलता है बस मुझे 3 टाइम की रोटी दे दो, दैट इज इनफ फॉर मी, एंड ये पूरा घर तुम्हारा, तुम आराम से मेरे साथ बैठो। तो मतलब यही इसमें द वाइड स्टोरी है। जो यहाँ पर बीच में बात होती है, एक बताता है कि इसमें एक कैरेक्टर है कि व्हेन ही केम फ्रॉम कश्मीर, तो ही वाज वेरी एडमेंट कि वो अपना यहाँ जम्मू में भी घर ऐसा ही बनाएगा जैसा उसका कश्मीर में था। एंड वो किसी तरीके से चिनार भी ग्रो कर लेता है अपने बैकयार्ड में। और वो अपने घर के अंदर बहुत ही एक्सपेंसिव कारपेट्स, फ्लोर कारपेट्स वगैरह मंगाता है कश्मीर वश्मीर से। अब फिर उसका जो बेटा है, सपोज वो बाहर चले जाता है। अब बेटे के प्यार में तो माँ बाप को जाना ही पड़ता है, फिर वो भी बाहर चले जाते हैं। अब जो इसने इतने चाव से अपना मकान बनाया था, इसका क्या करे? तो ये बोलता है, अपना जो इसका गार्डनर होता है, ये बोलता है यू टेक केयर ऑफ दिस होम, ये जो मेरा घर है। अब वो गार्डनर आता है, अपने घर वाले आते हैं, कुत्ते वुत्ते आते हैं। अब जो उसका कारपेट है, जो उसने इतने चाव से सजाने के लाया था, ही द डॉग इज पीइंग ओवर देयर, ही इज यूरिनेटिंग ओवर देयर, वो रह रहा है। तो उस घर का क्या हुआ बेसिकली, वो मैं इसमें दर्शाना चाहता हूँ कि जो लोगों ने किया था, सेकंड एक्सोडस दैट इज हैपनिंग। तो वॉइड जो लोग हैं वहाँ, अब हाउ दे आर फीलिंग दैट वॉइड। एक्चुअली आई थिंक दिस इज नाउ अ प्रॉब्लम ऑफ ऑल, पूरे इंडिया के शहरों की यही प्रॉब्लम हाँ है, हाँ, क्योंकि बच्चे एग्जैक्टली। बाहर है, सो दैट यूरोप इज में व्हाई है, अमेरिका में, दिस स्टोरी इज रेलेवेंट यूनिवर्सल अक्रॉस, है। यूनिवर्सल है ये, बिकॉज मेनी पीपल। बाहर की सोसाइटी तो दे आर ऑर्गेनाइज लाइक दैट ओनली, बट हमारी इंडिया में क्योंकि वैल्यू सिस्टम रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा है, तो these things are not, we are not accustomed to this kind of a situations. So this is also a void, yes. uh, but it's a good story. I mean, I also feel, because Kashmiri had two things very much they loved to do. One is the very expensive marriage, just from my grandmother's time,
and sister, they will take a loan, but they'll give a great marriage, and they will build a house. They'll make a big house, and they'll bring everything on. I had a girlfriend. They were living in Rajbagh. So they had. I mean, she was so engrossed, and she had so much of that kind of a क्या कहते हैं उसको higher उसको लगता था. I am from Rajbagh. We built a beautiful house there, double. I mean, beautiful. We have houses, and suddenly in 1990, it was just within 2 years we met. And 1990, but then she departed, and I lost contact with her. But we were close for 3-4 years. Suddenly, everything changed, and I remember her statement. He said that now my mother tells me, do not, store things, because we had stored in Kashmir like we were living there. We had to live there for millennia together. So that was the whole. They had a beautiful house and a beautiful locality, status, वो ये सब कुछ. तो कश्मीरीज का हाउस का बड़ा जबरदस्त, ये मुझे लगता है बाबा आदम के जमाने से है हाउस स्ट्रक्चर. एंड देन अनदर थिंग इज दैट शादी में तो यू विल से 7 नफर शामिल, 6 नफर शामिल. तो एक्चुअली अभी ये सारा पूरे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हो रहा है, बट कुछ कुछ अब बदल रहे हैं. पीपल आर नाउ चेंजिंग. सम ऑफ दे आर डूइंग फॉर क्लोज सर्कल मैरिजेस बिकॉज ऑफ हैजर्ड्स ऑफ द मेट्रोपोलिस के बड़े हैजर्ड्स होते हैं. तो वो कहते हैं, और कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं वो वाइज हो रहे हैं, यार कभी बीमारी आएगी तो उसी के काम लगेगा. चिल्ड्रन आर ऑल्सो बिकमिंग वाइजर. सो इट्स अ डायनेमिक्स, ever changing. You don't. Any other story you want to, which we have not touched yet? ये बुक तो मेरे पास यही है. आपने शायद मैंने देखा कि नहीं. आई हैव अ फिजिकल कॉपी ओवर हियर. अगर यहाँ देखेंगे आपके व्यूअर्स, ग्रामर ऑफ द वर्ड. Yeah. I'll show it here also. This is Grammar of the Void. Satyarth Pandita. And look it here. Yeah, this one. And this is a beautiful cover, and the publishers are, I don't know who are the publishers. Havakol Publishers, Delhi. Havakol, okay. And now this is your introduction, and this is a very nice photograph. Again, I was looking for your photograph because tomorrow I have to put it in a promo of FB. So I think I'll put this one. There is another one. If you want, like. And we talked about, I had, there's a letter of Kafka, this Camus or Kafka's letter written to his father. You can see his handwriting. Your handwriting will make you understand his mind. You are a psychologist, you can well see. No, I'm not a psychologist. I'm a I mean, PhD you are a neuroscience, PhD like student. yeah. But it's somewhere connected, I guess. Yeah. Of course. That's what I'm saying. You can. So this is Frank Kafka's letter, and this is Kafka. Right. Yeah, I've read his diaries and letters. Yeah, Camus. This is the wonderful. वो तो अपना पूरा ऐश वैश के साथ रहता था. इन दोनों में difference था. And what is here? I think this is your photograph. Yeah. So this was nice at the book launch. It was at the book launch. You went to the festival Srinagar, and I mean, how was the festival, literary festival? It amazes me that now we have a literary festival in Kashmir also. That's a great thing. How was the festival? It was the third time that they were doing this thing. Yeah, overall it was good, but the footfall was less. I was expecting more people, but the audience was less over there, like as compared to the other literary festivals that I have been to. Maybe because they are Jaipur. You have been to Jaipur Festival? Jaipur Literary I've Festival? been to Bangalore Literary Festival and Bhopal Literature Festival. Jaipur is my dream. Like, I'm not getting time to go over there. Hopefully next year, if something happens. We had V.S. Naipaul also there. Na? V.S. Naipaul had also probably once come. Probably this man, Girish Kannad, all the great people. Wonderful. Right. And the organizers are wonderful. Anupam Kher and all that. Right. Anyway, I would like. What should we further? Any story you want to tell? इसमें almost ये, but one thing
जो मेरे अपने लाइक कश्मीरी पंडित दोस्त हैं, लाइक जिनजी आप बोल सकते हैं, जितने भी बड़े भी मुझसे हैं, when I talk about them, I am talking about those who write or artist sense में, poems, be it poems or stories. मैं जब उनसे बात करता हूँ यार, why like they write stories but nothing Kashmir centric. मैं पूछता हूँ यार कि कुछ लिखो इस पे, कश्मीर के बारे में क्या है, like they always say me that they don't have direct memory of Kashmir. Oh. So they don't have anything to write. कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया, मेरे पास कुछ है ही नहीं मटेरियल, हाउ कैन आई राइट? तो आई होप इस बुक से जो मैंने 5 या 6 जो कश्मीर सेंट्रिक स्टोरीज है, आई डू नॉट हैव अ डायरेक्ट मेमोरी ऑफ कश्मीर, बट मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि टू राइट समथिंग अबाउट दिस कश्मीर और योर homeland, you don't need to have a direct memory, because you have something equally powerful to start writing, that is the memory of memory. We have the memory of memories, and that is very very important. You have you to start writing. तो जो मेरी यह स्टोरीज है, इसके थ्रू से जो लिखना चाहते हैं, एटलीस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वी कैन स्टिल राइट फ्रॉम आवर परस्पेक्टिव. जितना भी आज तक एक्साइल लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज फ्रॉम मेरे जो फादर की जनरेशन है, ग्रैंडफादर, एक्साइल लिटरेचर वहीं तक सीमित है. हमारी जनरेशन से कोई एक्साइल लिटरेचर में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, हमारे को तो वहाँ का पता नहीं है, बट वी कैन राइट थ्रू आवर एक्सपीरियंस हाउ वी सी इट. जैसे वॉइड है, जम्मू में मैं क्या देख रहा हूँ, ऑल दीज थिंग्स, या बार्ड्स रिटर्न, ऑल दोज थिंग्स. मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यू हैव द मटेरियल, यू हैव द स्टोरीज, यू जस्ट हैव टू पेन इट डाउन. You have been brought up in an atmosphere where your mother, father, grandfather, elders, they were all Kashmiris, and stories were still prevalent. You were listening. Right. And you said memory of memory. Please explain it further. See, जो मैं लिख रहा हूँ, whatever it is from the memory of my ancestors. वो मुझे क्या बता रहे हैं, right? Because मैं तो वहाँ रहा नहीं हूँ. अब अगर वो मुझे बता रहे हैं कि उनका घर ऐसा था, वहाँ ऐसा हुआ, इट इज फ्रॉम देयर मेमोरीज. जब वो जम्मू में आके मुझे बता रहे हैं, दे आर रिकलेक्टिंग देयर मेमोरीज, द मेमोरी ऑफ देयर हाउस, और उनकी मेमोरी से मेरी मेमोरी फॉर्म हो रही है कि हाउ दैट हाउस मस्ट हैव लुक्ड लाइक, हाउ दैट its form could slightly be different, but it will be as good as telling you the same stories. This is how literature is. आप कहीं की भी बात कहीं पे भी कर सकते हो, और अगर आप वो मेमोरी में अपने में डालोगे, एज यू योरसेल्फ सेड वॉइड, और मैं हायर लेवल ऑफ वाइड, एग्जिस्टेंशियल वॉइड की बात करता हूँ, इंडियन वॉइड की, तो इवन फॉर दैट मैटर आपके जो है ये Albert Einstein used to say that everything I got is when I was in complete void. I used to, when I was in the bathtub and I was completely relaxed and going into the deeper thought and relax and void. I was going into that bigger void. So from there ideas came, and the source बहुत higher होता है, और somewhere down the line हमारा subconscious and superconscious इसका connection है. So it's a matter of experience when we move on that direction. But anyway, that's so wonderful. I mean, I'm so glad that we have a Gen Z of that brilliance. Instead of moving over the stereotype classroom, I have read many contemporary literature, English literature of Kashmiri Pandits. But I'm very sorry to say that as a critic, because I've been an art theatre critic, as a critic, it has never appealed me. It has never appealed me. It is more of a classroom stereotype hangover. It doesn't have innovation. It doesn't have another dimension. It doesn't have a kind of a that deeper attraction as you have created. So this is how we learn from each other. I think I've learned a lot from you, and certainly things definitely they help all other people around. So anything else you want to say about your journey? Tell me about your life. You're yet unmarried guy. So there is no, apart from your literature not reflecting the romance of life or romance of nature or romance of existence. Maybe it reflects in the future. But what about romance of your own life? Nothing. You don't have any. I'm romancing with my rats with whom I am working. I work on rats. You work on rats? Yeah, I work with rats. Right. Kashmiri बोलेंगे ना, right. So from
morning till night, I am You are with the tending and rats. caring them. Yeah, I am tending and caring them. And currently, all my focus is just to complete my PhD, nothing else. No, that's And okay. I'm not talking about your engagement. I'm talking about your feelings. I'm talking hmm, about not engagement. I'm talking about the feelings. Feelings. So there's a romantic feeling in this age. Nah, there's always an advent of spring. nothing. I have Going. not ventured in that direction as of now or till yet, Oh my God. You should because do it. I It is also a have good experience. my publisher also says the same thing. Anyway, nobody can. You can take a person to the well, but you can't make him to quench the Drink thirst. the That all water. depends upon the person who wants to take. Anyway, that was all in a lighter way. That's your personal Yeah, choice. I that's respect fine. that. But it was all in a good humor. My shows are like that. I talk in a very. It's a conversation. I don't question answer. वो Yeah, lip tight दूरदर्शन इस तरह light वो मुझे नहीं है. I want it complete flow. yeah. So I think you must have experienced yourself that how Yes, sir. simpler and lucid way I try to do it. And what are your readers' messages? Tell me something about your readers. How do you had some messages about your book? So there, the reception of the book was really magnificent. Yeah, I was blown with the response that I was getting. So, like, the book did well in overseas also. Like, I think Sorry. in US it was trending at top two on Amazon. So it was a Oh, surprise for me as well in US. Yeah, in the initial time. So it was at top two on Amazon. So there were sales in Canada also. People are buying in from Germany, and in India also. Like, people, the I got some comments, and everyone is liking the story and the way they have been put, and they can see, like, some of the people have told me, like, they can see the evolution of me, my evolution as a writer and as a person. There are stories which were published at a previous time. And one more thing I would like to add, like, the three stories, Species of Suffering, and two more, they were published in some national and international magazines. And I oh. chose to keep them as they were published at that time, so that they will preserve my psyche, which was at Your that time when I was state of writing. evolution at that point of time. Yeah, yeah, yeah. So it is important. Otherwise, I could have made edits, but then it would have lost its, the essence that was at that time. Oh. So yeah, That's so wonderful. I've been receiving good comments, like, And mostly. your the costing factor, जो publication costing factor that has been uh, सर, इसमें मैं पब्लिशर्स का एक चीज बोलना चाहूंगा. फॉर्चुनेटली आई गॉट गुड पब्लिशर्स. हवाकल, आई इन्वेस्टेड 0 रुपीज, 0 पैसा, नथिंग फ्रॉम माई साइड. okay. I sent them 3 stories. They told me that they liked the 3 stories. They wanted the full manuscript. I sent them the full manuscript. After 3 months, they read it. They said, "We are going to publish." They did not charge any money, nothing. Everything Oh. is cost is borne by them, from publishing, printing, and everything. I just gave them manuscript. They gave me a book. That's it, So and they I helped mean, me a lot. they as a publishers, did they get their cost back, the publishing cost or the I did not circulation cost? ask. I did not You didn't ask them. ask. Okay. I did not ask. And you got your From complimentary copies. now, I'll send this video clip to them, and then I'll get my answer. This I video got. will be I received my complimentary copies. Yeah. complimentary book only yours or of your kith and kins also, friends also. They, No, they no, it give is author's copy. Author's copy they will give. only author's copy. Okay. Okay. Yeah. So when you go to the festival, the how are your book are sold on the Amazon, and they are all I mean Germans, native Germans, native Americans who are buying this book. See, some of them were my friends from college Okay. who are Okay. now pursuing PhD outside, but some of them are the natives of those places, because I only Okay. know of a handful of people who I know Okay. have bought, my friends. But apart from Okay. them, the sales that have been done, I don't know who has bought it. So So, I that's fine. So you are given already reader's message. That's a great message. You said that memory of memories. I think this is a great message which Satyarth has given. I think all our writers, young and old, all, because I don't believe that there's an age of a writer. Yes, there's a coherence apparatus that goes down. Writing is a therapy also, writing and reading.
So there is even if you don't have a memory, you still can write, and Of form may be course. slightly different, doesn't matter. So that is something great. With that, we'd like to, I'll just we'll go for a rapid fire, and then we'll close the show. Anything else you want to share? No, I think we have covered almost everything. We have touched Okay. upon every aspect. Okay, thank you. So what are your future plans in writing, first of all? So there are a lot of things, ideas in my mind. As I told you that I was working on a novel earlier, and one more thing, like me and my friends, we are working on an anthology. That is Anthology. one thing I would like to tell over here. It is titled "Children of Exile," and it is one first of its kind. So we have taken the poems and prose from all the people who were born post 1990 in exile, Oh, wonderful. बिकॉज अभी तक एग्जाइल लिटरेचर सिर्फ हमारे से सीनियर जनरेशन का है आज तक किसी ने क्योंकि हमसे कोई पूछता ही नहीं हाउ डू यू फील हम भी तो एग्जाइल में हैं, हम भी अगर बच्चे हैं जेंजी के हैं बट वी वांट टू टेल वो एक खालीपन जो है मगर हमारा कोई सुनने वाला नहीं है जितनी भी बुक्स आ रही है सारे वही लोग लिख रहे हैं तो मुझे पता है कि मैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं मेरे एज के या जो 1990 के बाद पैदा हुए हैं दे आर राइटिंग एंड दे वांट टू राइट बट देयर इज नो वन टू हियर सो हमने एक कलेक्शन बनाया है पोएम्स एंड प्रोज का जो यूएस में कुछ लोग हैं कुछ इंडिया में लोग हैं देयर आर टोटल ऑफ 15 पीपल जो इसमें साथ आए हैं सो होपफुली हम कोशिश करेंगे इस साल वो किताब बाहर लाने की सो इट विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो कंप्लीटली That would be चिल्ड्रन ऑफ nice. एग्जाइल में That would लिखी be हुई है nice. That would be very great. That's a great contribution to your community, to your legacy, and that quote which I read in the opening, civilization, अपने civilization को संभालने के लिए आपने. So we'll have a rapid fire. One, you have to give one answer only. Best Indian author. बेस्ट इंडियन ऑथर दैट्स एक ही नाम लेना है. टैगोर अरे क्या बात है यार, दिल को टच कर दिया तुमने सारा. सेम है, सेम है. माय गुडनेस. बेस्ट ग्लोबल ऑथर. ग्लोबल ऑथर सी देयर इज सर इसमें मैं एक चीज बोलूंगा इसमें वन ये रैपिड फायर है. नहीं नहीं इसमें लाइक बेस्ट का ये डेफिनेशन नाराजगी तो बनेगी, बट है रैपिड फायर है, क्या करें. आई एम बाउंड बाय माय रूल्स. मुश्किल है. आई गो विद दोस्तोयेवस्की Dostoevsky. Beautiful, beautiful. Your choice is wonderful. And best film you have seen. बेस्ट फिल्म रीसेंट या सब मिला के जो भी. ओल्ड इंडियन एक बोलिए, एक बाहर की बोल दीजिए, एक अंग्रेजी. although I am not that much romantic in nature but the film that I like is romantic and it is Spanish film it is The Dark Side of the Heart Beautiful. Beautiful. इंग्लिश हिंदी में है वो गुरुदत्त की मूवी है प्यासा, प्यासा कागज के फूल. वो दोनों उसमें मैंने देख रखे हैं अरे, मेरे को जो क्योंकि My उसमें goodness, जो your taste is स्टोरी है superb यार. हम दोनों का बहुत कुछ मिलता जुलता है. साहिर लुधियानवी का भी जो उसमें लिरिक्स है या जो स्टोरी है लाइक आई कनेक्ट विद दैट जो पुराने अगर मूवीज देखा जाए उसमें से. And one great thing about his movies is that his usage of light. Yeah, exactly. That is something which had stunned the entire, even French cinema in that point of time. They appreciated him. His usage Right, of light, you can see his light even if you see that movie. बाकी वो थोड़ा सा सैड होती थी और बहुत वो melancholic and depression Right, वाली right, होती right, थी. right. But Gurudutt was a genius. He was a genius. And best director, Best Indian director, abroad. दोनों एक एक बताइए. इंडियन में तो अभी हम आदित्य दर्जी के साथ जाएंगे क्या बात है. और हाँ और फॉरेन में द नेम इज डैरन एरोनॉफ्स्की. The movie you suggest? बहुत सारी हैं द फाउंटेन है उनकी रिक्वीम फॉर अ Fountain. ड्रीम है उनकी द रिक्वीम फॉर अ ड्रीम है उनकी जी पाई 1998 की एक अच्छी मैथमेटिकल जीनियस के ऊपर एक मूवी है इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब यू शुड डेफिनेटली सी दैट. You have seen Beautiful Mind? A Beautiful Mind I have seen, yeah. John It is Nash something के to ऊपर do है with John Nash के something ऊपर to है. do. That's wonderful. Anyway, I mean, it has something to do with the topic you are dealing with. I mean, I've seen that movie. He has schizophrenia in that movie. as a schizophrenic. And best director, Indian director, you said
Durandar. Okay, okay, that is Aditi ji. And best song, Indian. I don't know whether you like Western or not. Western and Indian. Western में ऐसे like I don't have any particular liking for these songs. I listen to all kinds of music. So every song ऐसा एक particular नहीं. You pass this ना, एक नंबर कटेगा. ठीक चलो है, ठीक. इसमें मैं आपको वो बता देता हूँ फिर उसमें वो मैं इसमें मतलब थोड़ा सा पुराना है, मतलब मैं सुनता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खाली नए वाले सुनता हूँ, बट पुराने में क्योंकि वो लिरिक्स उसके अच्छे हैं. एक तो वो है मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता अरे चला गया. क्या बात एक तो वो है, वो थोड़ा सा चलता रहता है उसमें, थोड़ा लाइफ में वो काम करता है वो. That's a kind और of वो that's a very मैं optimistic. मुसाफिर हूँ यारो, मुसाफिर यारो, नगर है ना ठिकाना. ना घर है ना ठिकाना, कभी धूप ने मुझे इधर कल बुला से लिया, जाना है. कभी रात ने उधर बुला लिया, उस टाइप से. हाँ मतलब वो अच्छा है. Oh, beautiful, दैट beautiful, इज wonderful. दी वो लिरिक्स जो है लाइक दे डिफाइन मी एक तरीके से. Okay, okay, that's fine. And the poet, Urdu, Hindi poet you love the most? पोएट ऑक्टावियो पाज, मैक्सिकन, नो डाउट. Huh? ऑक्टावियो पाज, Okay, मैक्सिकन पोएट. आई लव, next. नोबल लॉरेट, ही इज अ नोबल लॉरेट एंड आई लव हिम. Noble. And Indian, Urdu, Hindi में कोई? साहिर भी बोला था आपने वैसे. साहिर लुधियानवी तो है ही उसमें, तो मैंने काफी सारे उनके देखे हैं. ये तख्तो, ये ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर आई हैव मिल रेड भी हिज जाए. बुक्स एंड ऑटोबायोग्राफी, जो बायोग्राफी उसमें, तो विल गो द लुधियानवी. He was a great. He was a great man. And finally, you can murmur a song. 2 lines, 1 lines. Yes, that's how Jugal Call shows are. नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे से तो अरे अरे कैसा पारुन आप. I am coughing. I won't be able to sing. I am नहीं, but coughing. murmur, I didn't say that your rendition है पूरा. Murmur है. I mean, there is no, यहाँ कोई वो नहीं चल रहा, ऑर्केस्ट्रा नहीं लगा हुआ. स्टूडियो में बैठे हैं आप लोग बात. Any 2 lines, 2 लाइन जो आपको सबसे प्यारी लगती है, मरमर कीजिए अपने आराम से. We'll close it down after that. There are flowers for observing you. कौन सा गाना आप बताइए. अब मुझे ये नहीं पता ना, आप हिंदी उर्दू कोई गाना, फिल्म का गाना, कोई पुराना नया जो भी है, इन जो 2 गानों को छोड़ के जो आप बड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं मुझे भी. मैं गाना बताऊं तो फिर क्या, फिर तो सब हो गए ना. नहीं, हर घड़ी बदल रही है जिंदगी. गाने के लिए मुश्किल में डाल रहे हैं आप मुझे. हर घड़ी बदल रही है जिंदगी, आता है ये गाना. हाँ ये भी आता है. चलो गाइए, फिर मैं भी गाता हूँ साथ. आप शुरू कीजिए. हाँ बोलिए सर. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, धूप है छाँव है, कहीं है धूप, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो. Thank you very much. That's so wonderful. Okay, best wishes. Satyarth, it was a great talking to you. I don't for having me on your channel. ये आज तक का सबसे अच्छा इंटरव्यू मेरा हुआ है. इंटरव्यू भी नहीं, लाइक बातचीत. And दिल से, like it is, from the heart, कि apart from book, we talk about books, about authors, about films, about life in general, and that is what makes, these vlogs. But thank you very much. It was a great. I really felt with new ideas, new brain, the skill, the stories, masterpieces you have written. I wish you all the best, and I've learned many things from you. And with that, best wishes and goodbye. Thanks a lot. Bye. Thanks for coming. Thanks. So that was Satyarth, Gen Z, brilliant community person who is doing PhD in neurosciences and has written this book, and his ideas are so fresh, so objective. So it is a great departure. When we observe our Gen Z, we must observe them with care, and we must attend to them and listen to them. This is the future, not of our community, for the entire state and entire country, and rather the planet. So I'm very much thrilled that I was, with that energy, I connected with him. So I'll conclude with this Faz Ahmad Fam's this couplet.
जो इश्क को काम समझते हैं, जो इश्क को काम समझते हैं या काम से आशिकी करते थे, हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। Thank you very much. Next Sunday we'll meet with another great subject, with another great personality. It was great once again to having read over with all of you. Best wishes. Shabba Khair. Good night. Shabba Khair. Jai Hind. Thank you very much.